Yes, ma'am. Yes. Audible. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So if you're finding any kind of technical problem or any kind of disturbance, you can also message me, or you can also interrupt me, and you can inform me, so that we can provide you utmost quality to our technological support. So this is the paper MES-015 Operational Dimensions of Education. It is a compulsory paper, and those who have joined, please give your attendance in this chat box, so that we can be able to understand who are joining this program. So I think all of you are in the first year. Good evening, ma'am. Yes, good evening. So we are starting this session, operational dimensions of education. So this is a compulsory paper. Myself, Dr. S.R. Panda, Assistant Professor in Educational Studies in KCCT, Utkal University, Odisha. So in this paper, you will find 4 blocks are there. And first block is regarding educational operation at macro level, different situations. Okay, so in this block also we can find different units are there. I think 4 to 5 units are there. 5 units are there. But today we will discuss about only 3 units. You know that we are having 6 sessions for this particular paper, operational dimensions of education. But we can divide all this unit into different parts. So today we are going to discuss about these 3 units only: Unit 1, Unit 2, and Unit 3. So there are some rules and regulations for attending my session. All of you who are going to attend this program, they have to first go through these materials. They have to go through this paper. They have to learn something from these blocks, and after preparation only they have to attend this program. You know, this program is a distance education counseling program, where we are not going to discuss all those things, all those information in detail like your regular class. So you have to also support us. You have to also cooperate us. We are not going to discuss like formal education system. We are not going to discuss like regular class. So this is the class for your doubt clearance or some type of information we can also provide you. But in detail, we are not going to discuss. So it is better that you have to go through your material first, and after preparation, you have to come to my class, so that it will be easier for us to discuss our different doubts, and we can be more clarified. And again, if you are not coming with preparation, then it will be very, very difficult for you to understand different concepts. So less number of classes are available. As a distance learner, you have this type of responsibility. So let us start. So here in this block 1, we are having 3 units. So we are going 4 units, but we are going to discuss about 3 units. First one is your organized operation of education 1, organized operation of education 2, and Unit 3, that is innovative alternative models of education. But whenever you are going to discuss about this operational dimensions of education, let us first understand what this paper is and what is your understanding regarding this. So I will ask you some questions, and after that we will move ahead. So what do you mean by, first tell me, this education? First, very familiar word for you is education. What do you mean by education? Can anybody tell me right now? Ma'am, education Education means is the modification of behavior. modification of behavior. Modification of behavior. Anybody else? Education is a lifelong process. Education is the continuous process. Education is a lifelong process. Lifelong process. Anybody else? Any other idea? Education is a continuous process. It also includes curricular and extracurricular activities. Curricular and extracurricular activities are there. Any other definition or anything, any other idea? Jayasree, please mute your mic.
Ma'am, holistic development of personality. Holistic development of personality. Okay, कहबे किछि? Ma'am, all learn drawing out of the best man and child, mind, body, and spirit, according to Mahatma Gandhi. According to Mahatma Gandhi. So all round development, drawing out the best. कोउटा सबुटु अधिक भलो पिलार सबुटु आमे बॉडी रा सबुटु utmost डेवलपमेंट करि परिबा, माइंड रा डेवलपमेंट करि परिबा, आउ तार स्पिरिट बा तार निज सोल डेवलपमेंट करि परिबा. So those things are coming under education. So whenever we are educationalist, we are in the field of education. So first of all, we have to also think about how can we implement this education to our society. The implementation of education. As an educationist, we have to teach, we have to modify our society, we have to modify our system, our society, our state, our nation, our individuals, students. Again, we have to also what? We have to also modify our whole human beings. Okay, whole holistic development ame kahi pariba. Holistic body, mind, our soul. And for that we have to teach. And again, not only our duty is to teach, but also we have to provide some type of environment to our society, so that we can implement this education properly. Okay. So in this concern, let us move to this part, that is unit 1, that is regarding organized operation of education. So some questions I have prepared for you. So what are the goals of education? Goals All To round bring some development change, of the student. to bring Ma'am, some character change development. onto some type of modification, some type of changes we have to yes, obtain Ma'am, in yes. our good citizenship. good citizenship. Educated persons, we have to prepare. Skillful persons, we have to prepare for our society. Anything else? So this is development of society and nation. develop the society and nation. These are the some of the goals of education. So how can we make education practice delivered to learners? केमती आमे करि परिबा? केमती करि परिबा? आमे एजुकेशनल पॉलिसी को केमती पिलांक पाखरे पहुंचै परिबा? Through teaching. So teaching, yes, you are teacher, you are teaching. आउ को प्रक्रिया रे माने समस्त पाखो सोसाइटी पाखो को केमती पहुंचै परिबा? Ma'am, proper implementation of policies at ground level. Implementation of some policies. Anything else? By Ma'am, mass media. newspaper, television. Media. By media. Anything else? By awareness programs, madam. Awareness programs for people. Some awareness programs also we can make. Anything else? Good teacher appointment. Good teacher appointment. Also to be a role model for children. Role model for children. So we have to find out some ways through which we can we can deliver this educational practices to our learners. That is very important. You are skillful, you are a skillful teacher, you are a good teacher, you know many things, you are a knowledgeable person, you are a skillful teacher, and your target groups or your students are somewhere else. So for properly, you have to utilize your skill. So for that purpose, you have to prepare some kind of situation. You have to take help of some principles, some type of strategies you have to implement. By that only you can deliver your educational practices to your learners. So educational practices, so delivering these educational practices or education to learners, that is very, very essential. Okay, so for that purpose, we have to find out some type of channels, some type of ways through which we can deliver this education to our target group. So different channels of education, that is very, very important. Okay, very, very important.
So without which you are skillful, some type of resources are with you, but you have to find some ways through which you can deliver your resources to your target groups. That is very important. Okay, that is very important. So in this case, you have to find out some channels by which you can deliver your education to your students. So in this concern, let us discuss about what are the different channels of education. Different channels of education you have to find out. कौन सब channels अच्छी? दीक्षा आप गोटे अछि दीक्षा आप फर्स्ट मैडम स्कूल कहूनी जे इटा आईसीटी रिलेटेड किछि चैनल्स किछिटा स्कूल कॉलेजेस Ma'am, school, society, peer groups. Formal, informal, non-formal. Yes, very good. Formal channels are there, non-formal channels are there, your informal channels are there, by which we can deliver our education to our learners systematically and properly. ठीक से ताकू हमें पहुंचाई परिबा. Okay, otherwise what will happen? Otherwise, though we are a very knowledgeable person or very good person, we cannot send or we can provide those resources to our students. Okay, so very important part is that we have to use our channels systematically and in a very organized manner. Okay, by utilizing some policies and programs. Otherwise, we cannot benefit our society. Good evening, ma'am. Though we are knowledgeable, though we are resourceful, but we cannot make it available to all in a particular manner or in a very disciplined manner. So for that system, we have to also go through different channels and we have to provide those resources to our students. So for that purpose, different structure, different types of policies, different types of programs are designed at the apex level. What? For which concern? For the education purpose. And that is nothing but we have to also formulate different structure, educational structure we have to create. So different systems, different organization at the apex level, government level, they are designing those structure. They are designing this type of education system. Okay, so what is the structure of Indian education system? So that is available in this particular unit. Co structure kemiti kamo karuchi taku amuku dekhiବାକୁ padibo. So by which organized activity educational process get administered throughout the country? Ko way re ame taku ba ko activity dwara ame educational process taku administer kari pariba. That is nothing but what? Ko way re that is nothing but our operation of education. Nothing but the operation of education. This is the organized operation of education. Okay, so that is not, that process is nothing but, that process is nothing, or that activity is nothing but operation of education. So something is existing in between teacher, that is the source, and in between the teacher and the learners. That is the operation of education. Implementation of different policies, programs in a very systematic manner through different channels. Then only you can operate your educational activities throughout the society, throughout the country. That is nothing but this paper, operational dimensions of education. So sometimes students are asking, sir, madam, mera ko paper ame kiti buझी पारनु डा operational dimension माने हम कोन बुझी पारनु. प्रथमे पेपर टा बुझो केमिति ame educational process taku implement kariba in a very systematic manner, in a very disciplined manner, in a very uniform manner. Kemti kariya operational strategies we have to understand, different channels we have to understand, educational structure we have to understand. Otherwise we cannot work in this system. जने जदी काम करिबो केमिति खाली जानिथिले हबो नै जे केमिति आमे पढेइबा बा कोन पढेइबा ता सहित मध्य ए मैनेजमेंट बा ए ऑपरेशनल एक्टिविटीज विषय मध्य हमकु किछि आइडिया रखिया को पड़ियो. That is nothing but this paper. So how can we operate our educational activities? Through which norm we have to activate?
through which organizations we have to operate it. Okay, so कौन सब operational agencies गुड़ा कची, कौन सब administrative offices गुड़ा का apex level रे रही छी, जोटा कि हमारे education system को control कर चंदी, बस एमान को education पे different directions गुड़ा कर दो चंदी, ताकु मध्य हमको चिन्हिवा को पड़ियो, ताकु मध्य हमको जानिवा को पड़ियो. Then only we can educate our society in a very systematic and in a very disciplined manner. So that is nothing but your this unit 1, that is organized operation of education. That is a 1. Dita unit अछि कोटे 1 out 2. तो फर्स्ट विषय आमे पढिबा एइथरे कोन रही छी यूनिट रे कोन सब यूनिट 1 रे फर्स्ट तार ऑब्जेक्टिव्स देई छी एवं स्कूल एजुकेशन कोन सब स्ट्रक्चर रही छी कोन सब स्ट्रक्चर रही छी एजुकेशनल सिस्टम रो मैम प्राइमरी अपर प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एगुडा का सब रही स्ट्रक्चर प्राइमरी लेवल प्री प्राइमरी लेवल एजुकेशन रही सेकेंडरी लेवल रही higher education level रही so different organizations. So in this MA education program you will be able to understand different levels of this education, different structure of this education, so that it will be easier for you to understand different administrative operational activity those are going on at different level. केवल खाली टीचर हे गले जानि ना मैं सब विषय रे मध्ये आमे जाने काहे कि रही प्री प्राइमरी लेवल काहे कि रही प्राइमरी लेवल काहे कि रही सेकेंडरी लेवल कोन तार रही उद्देश्य सेटा केमिति ऑपरेट होउची. हां सो गोटे सिस्टम तमे जदे गोटे वर्कर ही गोटे जगह रे काम करछ खाली स्किलफुल हेले दरकार आमे किछि जान करि परियोनी ता सहित मध्ये तार रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन तार एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तार लेवल हायरार्कीज एगुडा को मध्ये हमको जानिया को पड़िबो. ओके सो ए यूनिट रे आमे एटा पढिबा को जिनसडा पढिबा प्री प्राइमरी लेवल प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन एगुडा को सब हमें पढिबा. सो in this concern some objectives are also there. So after going through this unit you will be able to describe this primary education जोटा हमें कहउथिले प्राइमरी प्री प्राइमरी सेकेंडरी एगुडा को सब हमें हायर एजुकेशन रिलेटेड किछि नॉलेज हमर रहिबो. So in your book also you will find this this kind of figure you will find. So what are you observing? Please tell. केमति रही structure? What are you observing at this level? So at the base level कोट अछि को system primary education. Yes, then upper primary, secondary, senior secondary. Yes, and again at the higher education level different further different fragmentation, different branches are there like PG, undergraduate, B.Ed, M.Ed, PhD, MBBS, B.Ed, B जोटा हमारा engineering education अच्छी technical education, open university, primary teacher training program. So different branches are there. So this is the conventional structure जोटा हमें कहवा Indian society रो conventional educational structure. रे कार unmute कर रखी रहिलो. Kajal, please mute your mic. Kajal Polai, please. Please mute your mic. So this is the basic structure of your education system, and you'll find that this is the main traditional type of structure you'll find, and as per that different policies and programs are prepared, framed for different system, pre-primary, primary, upper primary, iman ko pai different types ro program au policies गुड़ा को तैयारी होची एई गुडी को आगे रखी किरी हमरो विभिन्न प्रकार रो एक्टिविटीज गुड़ा को एग्जीक्यूशन करा जाउची, and we are operating our
education. So in this way, though it's a traditional type, but now you see after NEP 2020, जोड़ा जानी थी वो कौन है जी? What is NEP 2020 की कहियो प्रथम को? Ma'am, according to NEP 2020, this stuff. Ma'am, 5 Ma'am, plus 5 3 plus 3 plus 3 plus 4. system कराइची. First होची ma'am अंगनवाड़ी रू class 5 पर्यंत 5 को रखाइची. Then ma'am 6, 7, 8 को 3. तापर ma'am 9, 10, 11 को 4. 3 रे तापर ma'am 12 plus 3 3 वर्ष 4 system रखाइची. देखो एटा भी रही NEP 2020 National Education Policy 2020. So it has came to just before 2-3 years back. So it 2020 masira eta asila, and as per that policy they have divided this total academic structure into various parts. So earlier it was like that gote class re pila पढुथले प्रथम रु दशम श्रेणी पढुथले 6 वर्ष रु 16 वर्ष आउ तापरे से माने जाउथले 16 रु 18 वर्ष +2 पढुथले एवं +2 परे से माने हायर एजुकेशन लेवल को जाउथले सेकेंडरी परे हायर सेकेंडरी लेवल को जाउथले. दिस इज द प्राइम आई मीन ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर जोटा हमें एटा भी देखिले एइथरे देखिले जोटा चालीची आफ्टर कोठारी कमिशन एडा एई भलिया सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन आ कोठारी कमिशन पर एई भलिया ही स्ट्रक्चर हमर तयारी हेतिला. But NEP 2020 it has divided this whole education system into different parts like कौन जोटा कहले 5 5 plus 3 plus 3 plus 4. 5 3 3 4. So in this foundation part is 5 year जोटा हमें कहले 3 वर्ष से माने आंगनवाड़ी प्री प्राइमरी स्कूल ले पढिबे 3 वर्ष 3 वर्ष रु 6 वर्ष 3 year to 6 years. And 2 year पढ़िबे class 1 और 2 जोटा कहले age 6 to 8. This is the foundation basic education आमे कहबा 3 plus 2 जोटा रहला 5 year रहउची 3 वर्ष रहला तांकर प्री प्राइमरी और 2 वर्ष जोटा class 1 class 2 6 to 8 years. आ तापर रहला preparatory phase जोटा के हमरा class 3 to class 5 age हला हमरा 8 to 11 एति के भितरे से माने रहे पाठ पढ़िबे preparatory phase जोटा को होची class 3 to 5 माने रखि था. Class 3 to 5 को हमें preparatory कहिबा age 8 to 11 एटा रहला 3 वर्ष. Then class 6 to 8 age 11 to 14 that is the middle जोटा रहला middle part middle education जोटा हमें कहि परिबा 6 class रो 8 class पर्यंत. एउ ताप रहला सेकेंडरी लेवल कोटा क्लास 9 टू क्लास 12 हला ताको कहला सेकेंडरी लेवल हला क्लास 9 टू 12 एज हला 14 टू 18 जोटा हम 9 10 रहला हमरो लोअर सेकेंडरी आ 11 12 हमें कहूचे जोटा हमरे क्लास 11 आ क्लास 12 जोटा रहला हायर सेकेंडरी लेवल को आसी गला. दैट इज द न्यू पेडागोजिकल and curricular structure. बुझियला? So all of your many students are from education background. They might have known this concept of NEP 2020 new structure. जदियो एटा बही रे तुम मान का नाही, but you must know that. बही रे नथिले मते जोटा हमें ट्रेडिशनल टाइप रे पढुचे तो हमें एटा ही देइची बही रे किंतु एटा ठीक अछि या सहित जोटा ट्रेडिशनल टाइप रथिला ता सहित एटा मध्ये हमें मने रखिबा एग्जाम रे जदी दरकार पड़े एटा मध्ये हमें लेखिले किछि भूल हबो नै कारण एटा टिके बही रे से माने इग्नोर ताकू आउ थरे रिन्यू करिया कथा जोटा कि स्ट्रक्चर चेंज हे जेजी आफ्टर NEP 2020 बट यू नो एटा सबु स्टेट रे पंत भी माने ताकू इंप्लीमेंट करा जाय नै वर्तमान मध्य एई भलिया चालीची जोटा ट्रेडिशनल टाइप रे धीरे धीरे सेटा टाइम लागिवो सेटा धीरे धीरे सबु ऑपरेशन को हबो ऑपरेशन एजुकेशनल ऑपरेशन हबो ताको इंप्लीमेंटेशन करा जीवो धीरे धीरे. ओके सेही जिंस ही एठी आ गोटे स्लाइड मु बनै छी जोटा देखि परिबो. फाउंडेशन कोर्स रहला 5 ईयर हला 5 वर्ष प्री स्कूल आंगनवाड़ी 3 इयर्स आ क्लास 1 2 हला 2 इयर्स प्रिपरेटरी फेज 3 to 5 year 3 to 5 class sorry. मिडिल क्लास ला क्लास 6 to 8
सेकेंडरी लेवल है 9 to 12. सो जोटा NEP 2020 PDF अवेलेबल अच्छी जदि किए से विषय पढ़िया को भी चाहूच यही पर्टिकुलरली ये ऑपरेशनल डायमेंशंस रे कौन तांकर रही उद्देश्य कौन सब ऑब्जेक्टिव्स रही ता विषय आउ जदि अधिका जाने को चाहिबो ताले नेट रे मध्ये एटा तमे PDF मिलुची NEP 2020 तमे डायरेक्ट डाउनलोड करके पढ़ी पारिबो नेशनल न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. ओके सो नेक्स्ट आमे जिबा प्री स्कूल प्री प्राइमरी नर्सरी एजुकेशन. सो नर्सरी एजुकेशन आमे कहले क्लास तांका एज 3 रु आमे एक्चुअली तांको स्कूल पठेबा. सो according to some it includes parental education, prenatal, postnatal, preschool care जोटा कि वर्तमान सब तम माने जानथुबो छोट पिलान को प्री प्राइमरी स्कूल नर्सरी एजुकेशन दिया जाउची. सो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द प्री प्राइमरी एजुकेशन? प्री प्राइमरी एजुकेशन कहले कोन बुझो की कहबे? मैम प्री प्राइमरी एजुकेशन कहले हमें प्राइमरी एजुकेशन को एनरोल करिया पूर्व पिला मानन को प्राइमरी पई शिक्षित करेबा तांको एलिजिबल करेबा जा फळे से प्राइमरी जाके पढी परिबे. ता पूर्व को एबे एनपी अनुसार जो कहछि 3 वर्ष पढिया दरकार फाउंडेशन स्टेज रे फर्स्ट से तांकर फंडामेंटल न्यूमेरिसी और लिटरेसी डेवलप हो क्लास 2 भीतर दो थाय हमरो. तो स्कूल लो एनवायरनमेंट सहित भी से एक्वेंटेड हो. प्री प्राइमरी एजुकेशन रे माने खेल माध्यम रे तांको टीचिंग दिया जाय. से मानकर अर्ली चाइल्डहुड एज रो केयर निया जाय न्यूट्रिशन वगैरह रो केयर निया जाय. सो हियर आल्सो जोटा कि मैडम किंडरगार्टन मेथड किंडरगार्टन. So different types of models are there for pre-primary education. Convent level रहुची, pre-kindergarten रहुची, pre-primary, preschool, nursery school ए बड़ा सब कुहा जाउची. So different types of principles are implemented in different types of different kinds of pre-nursery or pre-primary schools. सबुर टिके पाठ पढ़ा पद्धति अलग अलग रहुची. सेति पय ताको विभिन्न प्रकार रो आमे ताको ना दोचे. सो से स्कूल गुडा कर देखिबो विभिन्न प्रकार वैरायटी रहउची. एबे तो विभिन्न प्रकार प्री प्राइमरी स्कूल्स गुडा को आहुरी एडवांस लेवल रे आसी गलानी. सो what is the importance of this pre primary education? What are you thinking? Because just before our time रे तो इसु नथिला आमे तो प्री प्राइमरी स्कूल ए सब रे पढु नथलु. बट काहे कि तमे भाबुछो जे ए प्री प्राइमरी एजुकेशन ता बेसी इंपोर्टेंट? काहे कि ना मैम से प्री प्राइमरी एजुकेशन से जो माने प्ले स्कूल को जेबा तो से सेटे माने पेशेंस रखि परबो कि माने फ्यूचर से सेति टाइम पढी परबो स्कूल में जो हमरा 6 की 8 आवर्स रहउची त ताको पेशेंस मिली परबो. तो तापर जो फर्स्ट शिबा टिके नर्वसनेस सब तार पिल्ला माने तो संग फ्रेंड माने देखिबो तारा पढी पारे टिके ताको इंटरेस्टिंग लागिबो. So can you tell me different types of psychological characteristic features of any pre-primary students? How are they? से माने केमती थांदे तांकर मनस्तत्व केमती थाए? से माने इगोसेंट्रिक थांते तांकर किछ ऑब्जेक्ट पर माने सी बेसी रही थाए. आउ ये जगह थ्योरी अनुसार मैम टॉयज ओरिएंटेड थांती. खेलिया पई क्यूरियोसिटी थाए, क्रिएटिविटी थाए. Yes, they want to get engaged in different types of activities, different types of games like you see drawing, singing, dancing, and they are curious also. So जति घरे रखिबे ताले से पिला माने कर सेति की डेवलपमेंट हेई पाइ नथे. बट बिकॉज़ सेति की प्रॉपर एनवायरनमेंट आमे ताको देई पारि नथाउ. से माने जे प्री स्कूल जाई थांती सेति केमिति की जाई चंदी प्री स्कूल के जदी कहिबे केमिति एनवायरनमेंट थाई प्री स्कूल रो? मैम लैंग्वेज डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट. से ठीक बेस करके फोकस करा जाय पिला माने केमिति खेल ऊपर फोकस करा जाय ताको पे वैरायटी ऑफ गेम्स रखा जाय थाए. लर्निंग बाय प्लेइंग टॉयज थाए तबे ताको इंस्ट्रूमेंट दिया जाय से ताको क्रिएटिविटी यूज करके माने किछि ड्राइंग बनाते कि कोन आउ जो माने कर लर्निंग वाल थाए किछि एक्टिंग करंती किछि स्टोरी कहंती मैम माने. लर्निंग वाल थाए तो आंसर अनेक सारे चित्र अंका हे जे थाए से चित्र मन को देखि कि भी से माने बहुत दिन से सिखि पारंती लर्निंग वाल रो. हां सो जनरल स्कूल ऑर्गन को यूज करके किछि सिखंती सेति माने वो सेंसरी मोटर भी तांको कुआ जाय. यस यस
So jemti jamane normal school तार बहुत different है. गोटे nursery pre nursery school गोटे primary school secondary school से सब थ्रू different है. It's a unique kind of school. And the difference lies with respect to its environment, teachers' behavior. एइथरे मध्ये difference रहते हैं. आउ कोथरे difference है. हम सेमाने बेसी एक्सप्लोर करिया को चाहि थांती किछि नुवा किछि हला से कारण कोन पे अछि काहे की हला तांकर बेसी क्वेश्चनिंग थाए एटे स्टेज रे. हां स्कूल रे कोन डिफरेंस है स्कूल रो एनवायरनमेंट केमति थाए स्कूल रे रे भी डिफरेंट मेथड डिफरेंट है करके सिंगिंग करके समान को पाठ पढाए इट्स अ वेरी समान को सोशल डेवलपमेंट हुए free environment, very free environment. You'll find there is no punishment for our students, and it's a very colorful environment. You will find different resources are there, like toys, different types of equipments. किछि खेल सामग्री बहुत खेल सामग्री गुडी को रही थाए. So it's a very resourceful institution आमे कहि परिबा. Nursery education आमे जदि कहि परिबा. So it's a very unique kind of school, is not it? Yes ma'am. माने पिले जो फैमिली रो मां बापा को छाडी के आसे से सेटा अनुभव करि पारे ना. हां हां फाइडी से अनुभव करि पारे जे पिलांक संगे जेमति जण मैडम बहुत जे लैंग्वेज डेवलपमेंट इट इज वेरी इंपोर्टेंट जोटा कि स्कूल रे मध्ये हमें पिलांकर घरे जोटा से माने लैंग्वेज डेवलप हेई पाइ नथे स्कूल गला पर से सब प्रकार लैंग्वेज कहि पारे सब प्रकार कथा बार्ता तांकर फ्लुएंसी आसी जाय जे ओडिया घरे को तो से हिंदी रे भी इंग्लिश रे भी कहवा सिखि जाई थांती. So it's a very different kind of environment you'll get in the pre-education. मैडम आ गुटे जिंस अछि ए स्टेज रे ना peer learning आउ या ऑब्जर्वेशन भलो हेता छोटा पे. Yes yes peer learning सांग मन को इमिटेट करि थांती से माने किछि सिखि थांती. तो एमती जदी एनवायरनमेंट आमे न छाडीबा पिला को जदी आमे जस्ट घरे ही रखिबा ताले कोन हो पिला खाली तमे देखिबो गोटे गोटे जगह रे पिला ने केवल एमती बापा मां को बापा मां ने विरक्त ही जेता को माने पनिशमेंट मध्ये देई थांती. सो गोटे इरिटेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हेई थाए घरे जोटा कि से माने स्कूल को गले तांका क्रिएटिविटी टा को बेसी भलो इंपोर्टेंस देई परबे. सो दैट इज व्हाई NEP 2020 by going through this type of psychology of our students at pre-primary level सेमान को बुहा जाय छै निश्चित भाबरे कंपल्सरीली आमे पठेबा कोठी के पठेबा स्कूल प्री प्राइमरी स्कूल को पठेबा. मैम ता ऊपर मध्ये बेसिकली बायोलॉजिकली सेही टाइम रे पिला मानकर न्यूरॉन भी डेवलप रे बहुत तो जेते से माने एंगेज रहिबे मैडम तंकर न्यूरॉन टा सेते एक्टिव होबो एज वेल एज सेटा बेटर एक्टिवली आगु को पार्टिसिपेट करि परिबो एजुकेशन रे. So then preparatory जो फाउंडेशन लेवल रे हमें जाउ छै तो फाउंडेशन माने बेसिक लेवल से समय स्ट्रांग हेई परिबे बहुत गुडे कथा जानि परिबे एवं सेमान को सही प्रकार हमें भाबबानी जे से माने धरि परिबिनी बहुत जिंस से माने धरि परछन आज काली का पिला से को जदी हमें सही भलिया स्कोप्स दोछु त निश्चित भाबे से माने आहुरी बढ़िया से माने करि पारु छंती मत एटा मत देखा जाउ छै. सो प्री प्राइमरी एजुकेशन इज वेरी वेरी essential for our education system and we should operate it at the foundation level. So different objectives of pre-primary education एटा मध्ये रही छि तुम बही रे जोटा कि पढिबो त माने. So healthy environment, light, sunshine, open space, fresh air they will find to organize a healthy happy regular life, to assist children to form wholesome personal habit creation जोटा तार मध्ये सेटा भी हमर काहे की करबा काहे की हम प्री प्राइमरी एजुकेशन दबा because we want to provide good personal habit to our students, to provide children opportunity for the exercise of their imagination and for development of their interest and skills, to achieve a real unity between external environment and home life. So if you will not send your children to pre-primary education institution, then they will only live within the four walls of your home and they will feel fearful or nervous to interact with their external environment. So there will not be any kind of balance, or they can develop maladjustment with the external environment in the later phase of their life. So here, whenever we want to provide this pre-primary education, we are also providing good harmony between the external environment and their home life. Development, self-expression, provision of ample opportunities,
development and stimulation of intellectual curiosity, emotional maturity, aesthetic sense, jota gita, nacha, drawing, egudaka sabu kale, social attitude and behavior, development of social attitude and behavior. Egudika madhya tanka bhitere development hobo. So that is why these are some of the important aspect of your important objectives of your pre-primary education. Habit formation, social emotional development, and aesthetic sense development. Good balance between the external life. So you might have also observed during your COVID period, many students, they left school and they just they are living within the four wall of their homes. So any time रे मत देखी तो बहुत पिला स्कूल न जाए कि घरे ସେମାନେ रहिथिले एवं सेही टाइम रे बहुत तांकर पर्सनालिटी रे गोटे प्रॉब्लम मध्य बहुत पिलांकर डेवलपमेंट हेतिला. तो जे स्कूल जाउछन्दी सेमान को भितरे गोटे कॉन्फिडेंस मध्य डेवलप होउची जे आमे मध्य किछि आमे इंडिविजुअल एक्सप्रेशन आमे करि परिबो बाहर सहित मिसी परिबो. सो फॉर दैट पर्पस इट इज वेरी इंपोर्टेंट. सो एइथरे मध्य in your book also some historical development of your primary education ए विषय मध्य देइची पढिबे जेमते कि डिफरेंट पर्सन डिफरेंट रोसो पैथोलॉजी एंड प्रोबेल. सो दे हैव गिवन सम आइडिया रिगार्डिंग उडेला मैकमिलन सिस्टर्स, मैडम मोंटेसरी मेथड रे पढाउ छी ना. सो दे हैव गिवन emphasis on pre-primary education, and they have also developed some types of materials, some type of teaching learning materials, some type of equipments for pre-primary students. In India also, after independence also, different commissions, including the Sargent report, Secondary Education Commission, Kothari Commission, they have also emphasized on pre-primary education. So both type of pre-primary schools gudaka rahichi, jemti missionaries gudaka kindergarten implement foundation karthile, the privately managed nursery schools, Montessori jota ame madam Montessori method re padhauji takar Montessori schools gudaka rahichi, pre-basic schools. So different names are there. Privately sponsored school, Anganwadi jota bartaman school government re madhya ba NGO gudaka so korchunti, Bal Mandir, single teacher school egudaka sabu madhya rahichi. So teacher preparation, some types of special teacher training programs or teacher education programs are there for nursery teacher development or nursery teacher preparation. So jemti tume B.Ed korcho secondary level pai, diet re porcho, diploma korcho jota ki rahila tomara primary education pai, just like that teacher education for pre-primary school. So tanka pai madhya kuche special training program rohichi jota ki Montessori training programs egudaka rohichi. Home science department of different universities, they are also providing nursery teacher training program, which is carefully planned, and their curriculum is little bit different from B.Ed or any other teacher training program. They are giving more emphasis on psychological development of that level of students. Music, play, literature, storytelling, ए विषय से माने बेसी emphasis देथन. तांका teacher training program that is different from our B.Ed, okay, B.Ed program. And in ready committee, तमरा ICDS जोटा रहिची, that is integrated child development scheme, early childhood care and education, ECCE, they are providing some training to our students, teacher training students. Then coming to primary education, जोटा कि हमरा प्रथमे तो कह जाउथला जे जोटा ए लेवल 6 वर्ष रु 14 वर्ष पर्यंत जोटा एबे चेंज हेची दे हम पुराना हिसाब रे जिबा. तो प्राइमरी एजुकेशन हमटा एलिमेंटरी एजुकेशन थिला क्लास 1 टू क्लास 8 पर्यंत एलिमेंटरी एजुकेशन, जोटा कि प्राइमरी एजुकेशन होची क्लास 1 टू क्लास 5, जोटा मिडिल हला 6 क्लास टू 7 और 8 पर्यंत कह जाउथला मिडिल स्कूल. तो क्लास 1 टू क्लास 5 जोटा एबे मध्ये चालीची प्राइमरी एजुकेशन. So this primary education, this after completion of pre-primary education, we are moving to primary education. जोटा प्राथमिक जोटा विद्यालय गुडा काम रहिची primary schools, they are providing primary education.
क्लास 1 टू क्लास 5 जोटा हम कहि पारे आ अपर प्राइमरी क्लास 6 टू क्लास 8 सेटा वर्तमान एबे मध्य चली छी। So after completing this pre-primary education, primary education is coming, and it's very important for spreading mass literacy and that is important for economic development, social structure, modernization of social structure, and effective functioning of democratic institutions. It is सब तारा objectives गुड़ाक. So, जोटा हमें कहबा primary education, it is influenced by some of the Christian missionaries. Some history is also there in your book related to this primary education. So, जोटा कि रही जेमति Christianity जोटा थिला हमर British education सही system द्वारा influenced हेची तार curriculum, grammar, history, geography गुड़िक सबु आउ फिक्स्ड इंटरवल जोटा हमर पीरियड उडा रे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम रे पढ़ा होची संडे को हॉलिडे को हाइची. So that is influenced by the Britishers. Se manukar anusara chalitila eta oda history sera diya hechi. So now position after independence you can see kon सब development hechi. kon सब development hechi primary education re after independence. So different committees like amara bibhinna committees and commissions गुड़ा कर रही से माने सब elementary basic education को importance दे चंती जिंती all Indian education survey एगुड़े का मते तैयारी हला ता विषय survey करा गला कौन करे माने after independence केमती कले आउ primary education development ही परिवा different models legislatory compulsory जोटा हम रही छी constitution रे compulsory primary elementary education हमें करिवा समस्ते पढ़िबे टी एक्ट 2009 रे आसी गला. आउ कोन को हाई जी को टीचर ट्रेनिंग 5 किलोमीटर भितरे माने जो प्राइमरी स्कूल तयारी करबा तो तांकर मिड डे मील स्कीम हैला माने गोटे पिलर स्कूल जो निहाती किछि आवश्यक जिंस जो सेटा भी फुलफिल करा हैला कि जेतेले किछि ग्रांट सरकार हैला तो बड़े समस्त को इन्वॉल्व करा हैला. गर्ल्स वाला को पई हॉस्टल प्रोवाइड करा वाला. हां मैम 30:1 मैडम एनसीएफ 2005 हिसाब रे तारा पांचटा मार्गदर्शी नीति जो सेटा थिला. मैम सर्वशिक्षा अभियान हितला ब्लैक बोर्ड भी हेतला. यस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आसिला मिड डे मील प्रोग्राम आसिला प्राइमरी एजुकेशन रो बेसी पॉपुलैरिटी करिया पे पिला में जो माने पाठ पढनान ताको आनी किना ताको सब प्रकार रो हॉस्टल फैसिलिटी मिड डे मील फैसिलिटी डिफरेंट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज फ्री एजुकेशन करिया पे मध्य कंपलसरी फॉर फ्री एजुकेशन. आउ कोन करा गला को मैम गर्ल्स एलपीजीएल केजीबीपी प्रोग्राम दीटा लॉन्च कराइतला. केजीबीपी 2002 रे 2003 रे. देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जोटा कराला आर्टिकल 45 जोटा कंपलसरीली जोटा कुहाला द स्टेट सेल्फ प्रथम जोटा लेजिस्लेटिव स्टेप निया गला कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन करा जे कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन ए पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन until they complete the age of 14 years. एटा रूल कॉन्स्टिट्यूशन रे रहिला जे समस्त फ्री कंपलसरी एजुकेशन पाइबे प्राथमिक श्रेणी रे एलिमेंटरी जोटा 14 वर्ष पर्यंत जोटा रहिछि प्रथम रु अष्टम सेटा आफ्टर इंडिपेंडेंस तार मैम कि जने कहिला बेले से कहितले जे प्राइमरी एजुकेशन 5 किलोमीटर भीतर रहे दरकार एटा 1 किलोमीटर भीतर रहे दरकार एटा सर्वशिक्षा अभियान में पॉइंट करतला पढिबा हम सर्व अछि पहिरे अछि पढिया सेटा सर्वशिक्षा अभियान भितर जने कहिले तो 5 किलोमीटर सेटा 5 किलोमीटर नुई. हां सेटा हमें पढिबा सेटा बही रे मध्ये अछि देखिबे सेटा सर्वशिक्षा अभियान रे सेटा दिया हिची तो हमें गोटे गोटे परे जिवा प्रथमे जडे इंडिपेंडेंस हे गेला तापरे कोन हला से विषय हम डिस्कशन करू छे वर्तमान. तो इंडिपेंडेंस परे ही जो आर्टिकल 45 कॉन्स्टिट्यूशन सेटा गोटे कोरा गला एवं ता सहित प्रॉब्लम्स गुडी को एनालिसिस करा गला कोनटा हमरा प्रॉब्लम्स रही छी प्रथमे ताकू एनालिसिस करा गला जे को प्रॉब्लम जगो ए जो हमरा प्राइमरी एजुकेशन गुडी को ठीक से हेई पारु नै. हां जोटा कि वेस्टेज स्टैग्नेशन प्रॉब्लम्स इन एनरोलमेंट ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स और रिमोट हिली एरियाज कौन सब प्रॉब्लम रही छी ए सब को हम प्रथमे एनालिसिस करबे एवं तापरे की पॉलिसीज गुडा को तयारी हिला माइग्रेशन ड्रॉप आउट थिला गोटे प्रॉब्लम. हां यस आउ कोन
अरे मैम माने जो माने रूरल एरियाज रे रहउतले से माने को पेरेंट्स चाहनथिले कि माने हम पिला जे कि पाठ पढंतु तापरे वुमेन एजुकेशन भी बहुत माने जते बेले खराब सिचुएशन थिला मैम स्कूल माने करे मूवमेंट टीचर होनथले एतपई टीचर मान पेरेंट्स माने छाडिया को जे मान को इच्छुक नथले तापरे हॉस्टल सुविधा नथला आ एससी एसटी पिला माने किछ स्पेशल प्रोविजन नथला आ तांग फेस किछ स्कॉलरशिप प्रोविजन नथला आ जो हॉस्टल टॉयलेट नथला गर्ल्स माने पई टॉयलेट नथला यस lack of toilet facility जोटा कि ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड परे ता ऊपर बेसी एम्फासिस दिया गला सर्व शिक्षा मैम लैक ऑफ ट्रेन टीचर यस 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 मैडम फैमिली रो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक रहउतले जा फल रे से माने ता पिला मान को नै कि चाइल्ड लेबर माने एंगेज होतले पिला मान हां हम तो तबरे अधिक mid स्कूल day भी meal facility नथिला also not available गुड बिल्डिंग so many different problems क्लासरूम भी ठीक से नथिला गोटे क्लासरूम रे कंबाइन भाबे रे होची कि पिला को पढौथिले तापरे मैम सेते बेले जो पढ़ा जाउथिला माने तांकला माने गोटे मदर टंग रे बुझी परथले जेमते पिला सेमते भी सेते बेले ट्रेन टीचर नथिले आज भी सब क्लास पई होची श्रेणी गृह नाही कि समस्त क्लास पई शिक्षक शिक्षयित्री नहंती से प्रॉब्लम रही छि वर्तमान मध्य टीचर स्टूडेंट जो रेशियो को धनी मानवा गरीब दरकार भितर तफात न देखा पई पिला मानन पे सब जगह यूनिफॉर्म रे व्यवस्था करा गला मैम डिस्टेंस थिला और रिमोट एरिया रे स्कूल रो फैसिलिटी एते न थिला पनिशमेंट दंड मुक्त एरिया वर्तमान हे गला सब चाइल्ड लेबर तो से माने कहते इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जो रोची हमें पाठ पढ़ी परिबारे तो से मान को पई फ्री हॉस्टल फैसिलिटी स्कॉलरशिप फैसिलिटी आउ विभिन्न प्रकार रो जेमति मिड डे मील रो फैसिलिटी रहिला फ्री बुक्स जोगे देबा साइकिल जोगे देबा एउडा का सब स्कीम गुडा का सब आसी गला मैम आ गोटे भी प्रोविजन हमर आरटी एक्ट रे लॉन्च करा हितला जो माने प्राइवेट रे भी जो माने गरीब पिला माने पाठ पढुछन तांको पई 25% रिजर्वेशन सीट रहबा आ जदी भी जटे गरीब श्रेणी पिला जे पाठ पढुची तार जो गवर्नमेंट स्कूल जति पढितले खर्च होइथांदा सेटा सरकार ताकू प्राइवेट स्कूल को बहन करिबो यस सो फॉर्मल एजुकेशन रो भी फैसिलिटी हला ना नॉन फॉर्मल एजुकेशन एनआईओएस जोटा अछि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विद्यालय बळिया आदर्श विद्यालय बळिया भी आदर्श विद्यालय नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय सो विभिन्न प्रकार विद्यालय गुडी हाई स्कूल लेवल रे सब बहुत गुडे नुवा नुवा स्कूल गुडा का सब तयारी होची वर्तमान मध्य आ एबे भी बहुत गुडे स्कीम चली छि टीचर्स में जानि थिबे जो माने जदी कि अच्छा एकलव्य स्कूल विभिन्न एबे अपग्रेड ही किना स्कूल गुडा करे बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर सब दिया जाई छि मो स्कूल योजना ए सब विभिन्न एबे तो चाली छि खाली 50 स्कूल्स मैडम मोडिसा नवीन ओडिसा मैडम 50 हां एबे तो खाली मोडिसा नवीन ओडिसा यस 5T रा देखिबे एबे स्कूल गुडा करे केते डेवलपमेंट हे गलानी सब विभिन्न प्रकार रो बोर्ड उडी को लगाय गलानी आईसीटी मॉनिटर स्मार्ट क्लास आईसीटी लैब ई लाइब्रेरी साइंस लैब सब तक हो गलानी सो प्राइमरी स्कूल हो सेकेंडरी स्कूल हो बहुत गुडे डेवलपमेंट हेलानी सब तो आमी देखिया दे आफ्टर इंडिपेंडेंस हमर बहुत गुडे डेवलपमेंट हेछि एवं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रो प्रोग्राम ऑफ एक्शन लैबोरेटरी एगुडा को सब विभिन्न प्रकार रो देछि बही रे पढिबे होलिस्टिक अप्रोच टू अटेंड द गोल्स ऑफ यूई बा यूनिवर्सल एलिमेंटरी एजुकेशन एटा गुडे स्कीम आस्तेला जोटा कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग समस्त मिनिमम रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक रे सब स्किलफुल हेई परिबे ता ऊपर मध्ये एम्फासिस दिया गला लेजिस्लेटिव मेजर माने हमर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 21 आउ तमरा 45 जोटा रही छि आरटी एक्ट 2009 रे आसला तार मध्ये देछि बही रे पढिबे आउडे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जोटा कि केवल ब्लैक बोर्ड भाबिबे ने केवल ब्लैक बोर्ड जोगे देबा पई एटा हैला एटा कोन पई हितरा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एटा माने स्कूल को ब्रांड माने एसेंशियल नीड्स सब पे थिला माने स्कूल रे बेसिक नीड जोटा थिला सेटा सेति पई आस्थिला यस आउ ता सहित मध्ये टॉयलेट फैसिलिटीज मध्ये जोगे देछि किछि काम होई छि ता सहित फीमेल टीचर्स बा टीचर्स रिक्रूटमेंट ताको मध्ये एम्फासिस मध्ये तरे दिया आइदिला तो केवल ब्लैक बोर्ड बोली भाबिबे नै तो सब तक विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज एतरे हेइ छि मैडम
मैडम वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम टे नेतिला मैम एतरे रेकमेंड कराइतला ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दीटा वेल वेंटिलेटेड रूम रहबा दरकार दीटा अति कम रे मिनिमम दीटा रहइबो आ ता सहित आसला स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर जदि हम प्राइमरी एजुकेशन विषय रे कहिबा स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स जोटा के एनसीईआरटी तार नेइतला रिस्पांसिबिलिटी सेई टाइम रे एवं 92 सेई पाखा पाखीरा हे 92 93 सेई टाइम रे से सब प्राइमरी एजुकेशन पाइका जो टीचर्स माने थिले तांको सब ओरिएंटेशन दिया जितला केमति क्वालिटी एजुकेशन हमें देई परिबा आ तापर आसला सर्व शिक्षा अभियान केबे आसला सर्व शिक्षा अभियान के कहबो 2009 रे आसिले किंतु 2010 रे इम्प्लीमेंट होला 2009 रे मैडम हैला कि 2010 रे इम्प्लीमेंट हैला 2009 सर्व शिक्षा अभियान 2001 रे इंडिया रे लॉन्च हैला किंतु सब स्टेट माने 2001 रे इम्प्लीमेंट 2010 तमने टारगेट रखिथिले कि जे यूनिवर्सल एनरोलमेंट डिटेंशन आउ एगुडा को सब अचीवमेंट एगुडा को सब हबो 2000 बाय 2010 भितरे से सब हमें करियो बोली कहिथिले तो सो एटा मते देखि परिबो स्लाइड रे मध्ये देइछि मु सर्व शिक्षा अभियान is implemented as India's main program for universalizing elementary education. It is for elementary education universalization. माने समस्ते universally समस्ते प्राइमरी एजुकेशन रे एनरोल हेबे सेटा ही हमर मेन टारगेट बढ़िबे सब हे बढ़िबे यस यस जोटा तमे देखि दो ओडे पेंसिल रे बसी कि दी जना बॉयज गर्ल्स में सब तार पोस्टर नहीं समस्ते यस मैम एसएस सर्व शिक्षा अभियान रो मेन जो स्लोगन ता थिला सभे पढंतु आ रामसर थिला पढ़े चलो यस universal access retention bridging the gender and social category gaps in education यार मेन लक्ष्य थिला universal access and enrollment access माने समस्त को अवेलेबल करेबे एजुकेशन टाको आ एनरोलमेंट माने समस्त आसी कि स्कूल एनरोल हेबे जे डिफरेंट सोशल कैटेगरी आ जेंडर जो गैप्स उडा कर रही छी ताको हमें ब्रिज आउट करबा आ एनहांसमेंट ऑफ लर्निंग लेवल ऑफ चिल्ड्रन यूनिवर्सल अचीवमेंट एगुडा को मध्य तार लक्ष्य रहिथिला then coming to the secondary education बहुत उडे जिंस देइची फर्स्ट पेपर हम जे देखि फर्स्ट यूनिट देखिबा secondary education what is secondary education कोन माने 10 plus 2 plus 12 so it is the bridge between elementary and higher education जोटा रहिला higher education अगेन 9 तार भीतर मझिरे प्राइमरी आ हायर भीतर रहिची सेकेंडरी एजुकेशन 9 10 11 12 ए क्लास उडे को रहउची जोटा कि वर्तमान मध्य एनईपी 2020 रे कोहा जाई से क्लास उडे को रहिबो बोली सो पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट कोन हला जोटा हमें कहिबा 1948 रे ताराचंद कमिटी रहिला राधा कृष्णन कमिटी आउ गोटे रहला एजुकेशन कमिशन जोटा डीएस कोथारी आउ सेकेंडरी एजुकेशन कमिटी सेडा सब कमिशन कमिटी गुडा को ता ऊपर कमिशन 1952 मैम हंटर कमीशन 1952 रे हां से सब सेकेंडरी एजुकेशन सेगुडा को सब ता ऊपर इंपोर्टेंस देई चंती आउ कोन को जिंस ऊपर इंपोर्टेंस दिया हिची जोटा कि देखि पारथो त माने स्लाइड रे वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इंटीग्रेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन प्रमोशन ऑफ योगा साइंस एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय संगठन नवोदय विद्यालय समिति नेशनल NIOS एटा ला एनजेड ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS हां जोटा कि रहिची रामसा भी हेतला राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हां रामसा वर्तमान रामसा केबे लॉन्च हला मैम 2009 तारो कोन उद्देश्य कोन थिला रामसा रो के कहबो मने पका केंति भोके सेकेंडरी एजुकेशन रे एनुअल अधिका पढेबा जो तमर तो 2010 रे से 9 रे से देखितला जो सर्वे करतला जे सेकेंडरी एजुकेशन रे एनरोलमेंट थला 52% 67% था ताको केंति 75% टारगेट रखबो 2020 टारगेट रखला आ यूनिवर्सल एक्सेस के रखतला 2017 आ यूनिवर्सल रिटेंशन रखला 2020 द मेन ऑब्जेक्टिव आ मैम तर जो ड्रॉप आउट होतला से टाइम रे सेटा को भी जेमति बंद हवा से टाइम सेति टाइम भी से मैंने बेसे फोकस करथिले देन हम जो ट्रेन टीचर माने केमति ट्रेनिंग पाइ जॉइन हेबे सेति ट्रेनिंग पाइबे सेति टाइम भी से मैं देखुथिले तबरे केमते में न्यू माने पढारे केमते में न्यू स्टाइल माने इंक्लूड करबा
केमती अलगा मेथड यूज करबा सेथि पय भी समान फोकस करथिले जेंडर गैप्स को भी सेमान केमती कम करि परिबे बा सोशल गैप्स को केमती बंद करा जाय परिबो ब्रिज करा जाय परिबो से सो विषय मध्ये एम्फसिस दिया जायतिला सेते मैडम 3 किलोमीटर भीतर सेकेंडरी स्कूल अवेलेबल मैम न्यू इंस्टीट्यूशन भी सेते बडे ओपनिंग करबा पय समान फोकस करथिले यस यस रामसर मध्ये एई जेमति सर्वशिक्षा अभियान प्राइमरी एजुकेशन पई हेछि सेमति रामसर मध्ये लक्ष्य गुडी को सेई भलिया थिला केमति हमें बेसी एनरोलमेंट करि परबा एक्सेस करि परबा स्कूल केमति बेसी ओपन करि परबा जेंडर और सोशल ब्रिज गैप को केमति ब्रिज करि परबा ए सब तक तार रहितला मेन ऑब्जेक्टिव्स आ टीचर ट्रेनिंग और ता सहित इंक्लूसिव एजुकेशन ताकू मध्ये एम्फसिस दिया मैम वुमेन एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग इंक्लूसिव एजुकेशन आ हॉस्टल फैसिलिटी पे कहितला बस सिस्टम रखिया पे से कहितला ट्राइबल एरिया रे पिला मान को डिस्ट्रिक्ट रे गोटे जो बोर्डिंग स्कूल जोटा कह जाय हमर हॉस्टल सेरा हर सब डिस्ट्रिक्ट रे गोटे रहया पे से रेकमेंड करतला आ स्कूल गोडा को पीपीपी मोड रे करिया पे करतला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रे हेटा गोटे रेकमेंड करतला सो दैट देबे देखिबो बहुत सा सही फेज रे तयारी हेछि हमर आदर्श विद्यालय गुडी को तयारी हला नवोदय विद्यालय थिला ग्रुप बस ताकू आहुरी एम्फसिस दिया गला ई सब समय रे सो दैट समस्त सेति एक्सेस एनरोलमेंट हेइ परिबे ओके सो एडा रहला तुमरो सेकेंडरी एजुकेशन पढिबो त माने सब इतरे नेक्स्ट हला हायर एजुकेशन सिस्टम व्हाट इज हायर एजुकेशन सिस्टम इज द टर्शियरी सिस्टम academic degree after completion of secondary education if you want to study some more skill academic field in a specialization in any academic field then you have to opt for higher education मैम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में आसिला यस रुसा हम कहि परिबे रुसा कहि परिबे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान सके मैम 2013 रे आसिला हां केबे आसिला 2013 रे आसिला सो इतरे देइछि तम बहि रे सब देइछि देखियो यूनिवर्सिटी रो कोन सब मेन रोल्स बा फंक्शंस गुडा कर रहिछि जोंति कि हमें देखुतिले हमें साइकोलॉजिकली जते देखियो आउट के पिला जते बड़ हो जाउछन्ती हमरो सेकेंडरी लेवल हायर सेकेंडरी लेवल को जाउछन्ती देयर माइंड इज मोर मैच्योर एंड मोर स्किलफुल सो ए टाइम रे कोन मेन ऑब्जेक्टिव्स बा फंक्शंस रहउछि यूनिवर्सिटीज रो to develop their critical thinking to provide some type of skill आउ कोन को हायर एजुकेशन रो कोन सब उद्देश्य गुडा कोन रहि छि को हम हायर एजुकेशन जणे जणे को प्रताप को प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन मैम हायर एजुकेशन रो ऑब्जेक्टिव थिला माने जेंति गोटे पिलाटे तर जतरे कॉलेज सरण तो पढा पढी सरीबा जेंति से संग संग गोटे जॉब करि परथबो माने बेकारी समस्या न रहउतबो एसे सेथि पय से एम्फसिस करथिले हां सो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट जोटा कि वर्तमान कुशल इंडिया सब चली स्किल मूवमेंट चली विभिन्न वोकेशनल एजुकेशन ऊपर एम्फसिस दिया जाउची नॉट ओनली वोकेशनल एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन रहेला डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च गुडी को हमें मध्य हायर एजुकेशन को गले करि परिबा रिसर्च ऊपर मध्य एम्फसिस दिया गला हायर एजुकेशन आउ कोन हम रिसर्च ऊपर बेसी फैसिलिटी देई छै हायर एजुकेशन ने यस सो स्किलफुल मैन पावर लाइक डॉक्टर इंजीनियर्स बिजनेस मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर्स और एनी स्किल बिजनेस जोडा को भी रही छी सेहि रे केमति हमें मैन पावर डेवलप करि परबा कंट्री पई सो दैट वी कैन एनहांस आवर इकोनॉमिक सिस्टम सो जदि तुम गोटे कंट्री रे प्रोडक्टिविटी ऑफ नेशन यस इकोनॉमिकल प्रोग्रेस में गुड मैन पावर दरकार जोटा स्किलफुल मैन पावर दरकार जोटा कि हमरो सेही एकेडमिक लेवल हायर लेवल रे जदी पढिथिबे भलो वोकेशनल ट्रेनिंग स्किलफुल हेतिबे ताहले से माने देश को भलो इकोनॉमिक सिचुएशन बा कंडीशन दे परिबे डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसीज प्रोग्राम टू प्रमोट वैल्यूज प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर ट्रेडिशन एगुडा को सब रही छी मैम सेते बेले माने जो पाठडा केमते के बड़ा विषय केंद्रित न है कि निज जीवन सहित केमते कनेक्ट हे परिबो सेटा पर भी फोकस कराइतला यस यस लाइफ एजुकेशन ऊपर अच्छा सेही कंडीशन नहीं पिला माने हायर स्टडी करि पार नथिले से जा पर से माने भाई स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करा गला So development are related to bohire mate deichi development of information and library network in order to enhance your higher education in network jemti amara eto
रही आउरी एडवांस सिस्टम सब हो गलानी सेही टाइम रे टिके पुराना मटेरियल जेतु सेटा मध्ये दिया है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल एबे भी अछि नैक नेशनल एजुकेशन टेस्टिंग नेट एगुडा को सब मध्ये तार रिलेटेड क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम जंदी हमर नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल एबे ना काम कॉलेज गुडा को सब आछचंदी समान देखुचंदी केमती इंफ्रास्ट्रक्चर रहिची केते टीचर्स अछंदी तार फैसिलिटीज पिलार सपोर्ट सिस्टम केमती रहिची जरे देखिबो ना इग्नोर लेखा आइता नाक प्लस 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 सब लेखा आइता पढतो देखु तो ताको वेबसाइट आगे मैम सर देखंती माने ओटे कैंपस रो बेसमेंट केते ठीक अछि केते पिला सपोर्ट करछंती तापरे हमर जे रिसर्च पई केमती माने फोकस माने प्रोवाइड करा होची केने एनकरेज करा होची से सब जिंस सब देखुचंदी त सेमती से माने मॉनिटरिंग करछन गुटे टीम आसी किना से माने सबु जिंस देखुछन सातटा क्राइटेरिया करिकुलम केमती अछि पिलर मेंटरशिप केमती अछि सपोर्ट सिस्टम केमती अछि टीचिंग लर्निंग केमती चली टीचिंग सिस्टम लर्निंग सिस्टम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कोन रहिछि टीचर्स ट्रेनिंग केमती रहउछि टीचर्स कर क्वालिफिकेशन कोन रहिछि लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स केमती अछि साइंस लैब केमती अछि पिलांकर क्वालिटी रो टीचिंग क्वालिटी केमती रहिछि पिलांकर सब फीडबैक नउचंदी आ सेही अनुसार से माने को करछंदी ग्रेड दोछंदी B++B+ कि A++ ए भलिया सब ग्रेड पाउछंदी तो एबे मध्ये आम कॉलेज को मध्ये आसुछंदी जेतेलगु एबे मध्ये देखि दो एफएम यूनिवर्सिटी A++ पाइला तापरे उत्कल यूनिवर्सिटी मध्ये ता और जे जहार एक्रेडिटेशन रेवेन्सा यूनिवर्सिटी हां रेवेन्सा मैम यूनिवर्सिटी रेवेन्सा यूनिवर्सिटी A++ हां सो समस्ते सेइथरे वर्तमान सब टीचर्स माने हायर एजुकेशन लागिजन केमति आमे भलो ग्रेड पाइबु आ जदी भलो ग्रेड न पाइबो तो सेति तमको तम यूनिवर्सिटी को सेति से माने कहिबे मॉनिटरिंग जे टीम आसी कि कहबे जे ठीक हैला नै आ टिके भलो करो ये सब करो से माने मध्ये ताकू मध्ये देबे एम्फासिस देकित कहिबे सो एमति सब रहिची यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन हां सेरा मध्ये तार यूजीसी रा नेट एग्जामिनेशन विषय तुमे पढिथिबो नेट एग्जामिनेशन जोटा नेशनल टेस्टिंग जोटा होची एजुकेशन टेस्टिंग नेट जो माने असिस्टेंट प्रोफेसर हेई परिबे बा टीचर्स हेई परिबे यूनिवर्सिटी आ कॉलेज जोटा को सन गोटे नेट एग्जाम क्लियर करिया को पड़ी थाए ताहले जे जने टीचर हेई परिबो यूनिवर्सिटी किबा कॉलेज रे नले से हेई परिबो नै तो सेति पई मध्ये यूजीसी याकू इंप्लीमेंट करि थाए नेट एग्जामिनेशन so these are some of the aspects of higher education ma'am now coming to authority टिके जो नेट एग्जाम सेटे करना जो नेट जो कहले से राति कह रहा थे नेट एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय यूजीसी आगरु यूजीसी होतला एबे मध्य सीबीएसई भी करूची सेटा बट ताकू यूजीसी रो माने गोटे मिलिबो जडे जदी नेट एग्जामिनेशन दोउची ताहले से एलिजिबल हेई पारुची असिस्टेंट प्रोफेसर हेई पारिया पई बा स्कूल सॉरी कॉलेज किबा यूनिवर्सिटी रे टीचर हवा पई सो प्रथमे जनकू सेइते पास करिया को पड़ी ओडे नेट एग्जामिनेशन पास करिया को पड़ी था यूनिवर्सिटी रो टीचर्स हवा पई तो सेटा कोन तार उटे मूल्यांकन करावला बा क्वालिटी मेंटेन कर पाछि ताकू सेइतरे हम रिक्रूटमेंट दोउनो सेटा उटे मिनिमम रिक्वायरमेंट रहूची उटे टीचर्स अपॉइंटमेंट पाई तो सेटा मध्ये चांस करा जाउची जे तमे जेमती ताकू नेट क्वालिफाई करिछो कि न करिछो ताकू मध्ये हायर एजुकेशन लेवल रे सेमतिया टीचर्स को ही रिक्रूटमेंट दिया होची सो दैट क्वालिटी मेंटेनेंस हेई परिबो सो सीएसआईआर टा जो तुम्हारा साइंटिफिक रिसर्च यूजीसी नेट हला आर्ट्स पिला को पई सीएसआईआर नेट टा हला तुम्हारा साइंस पिला को पई ताकर साइंटिफिक रिसर्च अछि ना साइंटिफिक रिसर्च में जे हेई पारे तो सेटा साइंस पिला को पई सीएसआईआर नेट होची यूजीसी नेट हमरा आर्ट्स पिला को पई होची ठीक अछि त टिके गोटे मिनिट टिके रह जानतु तापरे हमें जीवा सेकंड पार्ट को सेकंड यूनिट को टिके गोटे टिके
Okay. So second unit is about organized operation of education. So this part is related to higher education. Mainly हमें higher education में केमती सबू कौन operation होउची से related. तो इतरे कौन आमर अच्छी concept उड़ा का teacher education, medical education, agriculture education, technical education, open and distance learning system, correspondence course institution, open universities, online learning, आउ केवल higher education नहीं national institute of open schooling ताकू मध्य सेत्रे include करा है जी. So some branches are there with respect to our education system. से related detail इतरे देजी केमती एटा operate होउची आम country रे से related India रे केमती cooperate होउची से विषय रे मध्य इतरे दिया जाइची. So you can find its objectives. Different phases of teacher education ता विषय में जानिबा National Council of Teacher Education, Academic Staff, College. So सुनी थो से विषय डिटेल आमे एई यूनिट रे पढिबा यूनिट 2 रे. So first is your teacher education. Teacher education, what do you mean by teacher education? Pre-service teacher education और in-service teacher education. तमे pre-service teacher education माने जो गोटे क्वालिफाई करबा पई तंकर ठीक से माने बने मैम टीचर एजुकेशन कहले गोटे हम टीचर मानकर मैम टीचर एजुकेशन मैम टीचर एजुकेशन कहले हम टीचर मानकर प्रोफिशिएंसी तंकर एबिलिटी तंकर स्किल जो पढाइबार स्किल केमिति क्लासरूम हैंडल करिबार स्किल आ जो करंट सिचुएशन जहाँ भी चेंज होची केमिति टीचर माने जाकी क्लासरूम सिचुएशन हैंडल करि परिबे सेति पई ट्रेनिंग दिया जाय सेति पई दी प्रकार छोटे प्री सर्विस छोटे इन सर्विस प्री सर्विस टीचर माने एनरोल करिया पूर्व त ट्रेनिंग दिया जाय जहाँ पड़ा जाकी से माने टीचर बनी पारिबे किंतु इन सर्विस टीचर ने एमती दिया जाय किसी करंट सिचुएशन चेंज हैला किसी एजुकेशन सिस्टम रे जहाँ पड़ा त किसी सिखाबो से माने जाकी क्लासरूम जाकी पढाई परिबे हेडा. सो टीचर एजुकेशन आउ की किछि कहबे की. So teacher education got a definition is teacher education or teacher training refers to programs, policies, procedure and provisions designed to equip prospective teachers with the knowledge, attitude, behavior, approaches, methodologies and skills they require to perform their tasks effectively in the classroom, school or in the wider community. So I have collected this definition from one website. So it's a very vast system, you can say. जो तरह के हमें डिफरेंट इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्रोग्राम्स पॉलिसी प्रोसीजर को वे रे हमें ताको टीचर एजुकेशन इंप्लीमेंट करबा प्रोविजन सब कोन रही छी तार रूल रेगुलेशन कोन रही छी केमती गोटे टीचर प्रिपेयर हबो आ को एस्पेक्ट रे हमें ताको गोटे टीचर कहि परिबा को एस्पेक्ट रे तार मॉडिफिकेशन करा जीवो नॉलेज रे एटीट्यूड रे बिहेवियर रे अप्रोच मेथोडोलॉजी एंड स्किल्स ए सब रे ताको केमती वेल इक्विप्ड करा जीवो. सो टीचिंग स्किल पेडागोजिकल थ्योरी प्रोफेशनल स्किल्स ए सब को नै कि हमें कहि परिबा जे एटा गोटे टीचर एजुकेशन सिस्टम. So it's a system. Teacher education system. It's a very important part of our education system. तमे कहि परिबो. And it in your books also it is given that is divided into 3 phases. So gradually it is evoluted. I mean evolution जदि कहबा evolution हेची आम टीचर एजुकेशन सिस्टम रे तो काहा को नै कि ना pupil teacher system, teacher training, teacher education. So first of all, it was known as pupil teacher system, 1800 to 1882. तो ए टाइम रे एते बेसी किछि टीचर टेक्निक्स डेवलप हेई नथिला बट दे आर implementing some monitorial system, monitoring some advanced or knowledgeous student. They are just controlling other students or peer groups or pupils. So सेमान को डे मॉनिटरिंग सिस्टम रे टिके नॉलेजेबल हेगला से अलगा मन को मॉनिटर करिवो असिस्ट करिवो पीपल मन को पाठ पढी सैला परे. सो एगुडा को कोहाउला पीपल टीचर सिस्टम पिला माने जे स्टूडेंट माने टिके पढी कि ना से माने पिला मन को अलगा ताका संग मन को से माने कंट्रोल करले. तापरे आसीगला हमरा टीचर ट्रेनिंग जोटा आसीला 18 बिफोर इंडिपेंडेंस जोटा हम कहि परिबार 1882 टू 1947 एई समय भितरे आसीगला. हाँ द ट्रेनिंग कोर्स जोटा 1 year कोर्स थिला आउ थ्योरी प्रैक्टिस बोथ पार्ट हमको ट्रेनिंग दिया जाउथला किछि स्किल ट्रेनिंग दिया जाउथला प्रैक्टिस स्कूल गुडा को थिला. हाँ सो ए गुडा को सब रखा जाइथिला.
तो टीचर ट्रेनिंग कहा जाउथला 1882 1947 हम ट्रेनिंग कॉलेज ओडिसा रो राधनाथ ट्रेनिंग कॉलेज सुनिथिबो सेटा प्रथमे कते 1924 25 बा 28 भितरे सेटा करा गला एवं ट्रेनिंग रे किछि केवल हमर किछि स्किल गुडी को पढा होतला एवं किछि एस्पेक्ट रे मध्ये केवल पढा होतला एवं विशेष किछि पढा हो नथिला आउ ता ऊपर एते एम्फासिस दिया जाउ नथिला केवल टीचर माने केमती पढेबे से विषय रे कुहा होतला आउ एते डेवलपमेंट हेइ नथला जेमती तुमको एबे कहली इतरे पेडागोजिकल थ्योरी टीचिंग स्किल्स प्रोफेशनल स्किल एगुडा को विषय एते कुहा हो नथिला केमती पढेबो केवल टीचर स्टूडेंट मान केमती कंट्रोल करबो ताको के भली भाबरे को एस्पेक्ट रे को प्रोसेस रे पढेबो ए विषय को केवल पेडागोजिकल एस्पेक्ट रे सेटा लिमिटेड हेइ कि थिला सो ता पर को हाँ ता सेटा जोटा कुहा होची किछि कमिटी तांको रेकमेंड करले जोटा पढिबो तार हिस्ट्री उडा को रहिची टीचर एजुकेशन तापरे आसिला आफ्टर इंडिपेंडेंस इट हैज रेकमेंडेड दैट टीचर ट्रेनिंग हमें कहबानी टीचर एजुकेशन कहबा इट इज मोर एप्रोप्रिएट काहे कि टीचर ट्रेनिंग काहे कहबा कोहा जीवनी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ट्रेनिंग और एजुकेशन भितर कोन डिफरेंस रहिची हम ट्रेनिंग कहले गोटे एबिलिटी गोटे स्किल टा डेवलप करबा एंड एजुकेशन कहले गोटे सिस्टमैटिक प्रोसेस जे हमको नॉलेज गेन करबा सिस्टमैटिक वे जोटा फॉर्मल वे जे जेटा को एजुकेशन कहले जोटा कि हमें कहि परिबा ट्रेनिंग ता हमें विभिन्न एनिमल्स मन को मध्य देई थाउ इट इज नॉट दैट मच लाइवली एज एजुकेशन एजुकेशन इज मोर एडवांस्ड एंड मोर प्रैक्टिकल देन आमे ट्रेनिंग को बेसी एम्फोसिस न देके एजुकेशन करिया बोली विभिन्न कमिशन जेमति कहले हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन माने सबु इंपोर्टेंस देले बोथ प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन को हां सो इन सर्विस टीचर जोटा तमे कहतु लागुर प्री सर्विस एजुकेशन रहिछि माने जो माने जस्ट जॉब करि नाहंती सेवन को प्रिपेयर करा छिबो एवं इन सर्विस माने जो माने जॉब रे अछंती टीचर एजुकेशन सेमान को मध्य दिया जिवो दैट इज द इन सर्विस एजुकेशन हां so different institution impacting different types of programs which is also available in your material like training center for primary teachers training school for primary teachers training for undergraduate graduate teachers regional colleges or regional institute of education NCERT सुनिथिबो training institute of special teachers कोडी अछि ओडिसा रे के कहबो को स्पेशल टीचर्स माने कोन को मैम जो स्पेशल स्कूल मन के पढ़िया पे जो टीचर मान को ट्रेनिंग दिया जाए सेटा स्पेशल बीएड रहता गोटे सेटा जो हमरो रिहैबिलिटेशन काउंसिल हैंडीकैप पर्सन माने को एजुकेशन दिया जाए रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आरआई भुवनेश्वर डब्ल्यूएसएन पिला मान को टीचिंग दवा पय मान हां सेइतरे समान हमें केमति गाइड पढे परिबा बा आउ किछि डिसेबिलिटी रहि समान केमति पढे परबा तार ट्रेनिंग गोटे भुवनेश्वर गोटे चेतना ओली गोटे ऑर्गेनाइजेशन अछि दैट इज अप्रूव्ड बाय आरसीआई सॉरी जोटा हमर रहिछि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ता से माने तार गोटे इंस्टीट्यूट चेतना से माने सेटा गोटे इंस्टीट्यूट रहिछि देखिबो केतडा जदी के जीवो सेठी देखिबो केमति सेठी टीचर बीएड एमएड सब रहिछि सेठी से माने सेठी मध्ये पढौछि मैम मो सेठी बीएड करिछि चेतना इंस्टीट्यूट आगे सुचिस्मिता दाले कहियो कोन सब सेठी पढा होबे कोन सब पाठ रहिछि सेठी केमति कोन सब कोर्स रहिछि को एटा टिके पिला माने हमर जानि नाति माने प्राय तो हमें जनरल बीएड विषय सुनिछु किंतु स्पेशल बीएड ता कोन टिक कहिलो हमें सुनिया मैम स्पेशल बीएड रे जनरल चाइल्ड की जेमति हैंडल करिवो ता सहित हमें जेमति माने आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी फील्ड रे मो बीएड करथिली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पिल्ला को केमति हैंडल करिवो तांकर डेली लिविंग स्किल तांकर मटेरियल केमति प्रिपेयर ए सब रिलेटेड सब हमको ट्रेनिंग दिया है यस सेटा दी प्रकार थाए गोटे फिजिकल डिसेबिलिटी गोटे मेंटल डिसेबिलिटी जोटा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से कहउछन तो सेमान को मध्ये हमें पढेबा तो सेमान को टीचर तयारी करिया को पड़िबो सेमान को पई गोटे जनरल पिला से जनरल बीएड से पढै परिबनी तांकर स्पेशल इक्विपमेंट्स रहिछि स्पेशल तांकर थ्योरीज फिलोसफीज उडा कर रहिछि तो सेटा स्पेशल बीएड रे हमें पढि थाउ तो सेटा केवल गोटे जानि थाउ सेमतिया आउ एक्सटेंशन स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स इन सर्विस प्रोग्राम सेक्रेटरी जो एसीआरटी एउडा गत अछि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी सो एनसीईआरटी रे मध्ये आरआई जोटा हमें कहि परिबा सेतरे मध्ये बीएड एमएड इंटीग्रेटेड बीएड ए सब कोर्स उडा को रहिछि ता सहित स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एसीईआरटीज डाइट्स
डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग सब डिस्ट्रिक्ट रे रही एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस कोरी अछि यूनिवर्सिटी रे हम उत्कल यूनिवर्सिटी रे मध्य रही जोथे कि हम यूनिवर्सिटी टीचर्स माने पढ़ी थांती हला एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन जेमति राधनाथ ट्रेनिंग कॉलेज जोटा आईएससी इंस्टीट्यूट ऑफ बीएड और एमएड एमफिल पीएचडी एजुकेशन रे जने करि परिबो कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन सिटीज हां नरेंद्र देवी आ हमर जेमति विभिन्न ट्रेनिंग कॉलेज गुडाक से गुडाक रही टीचर एजुकेशन ओपन यूनिवर्सिटीज एंड कॉरेस्पोंडेंस कोर्स इंस्टीट्यूशन हां ओपन यूनिवर्सिटी जेमति इग्नू रहिला हाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स गुडाक मध्य कॉरेस्पोंडेंस कोर्स रो यूनिवर्सिटी रो गोटे विंग रहउची डिस्टेंस एजुकेशन विंग सेइथरे मध्य डिस्टेंस तमे एमती उत्कल यूनिवर्सिटी रे बहुत गुडे कोर्स रही एमए एजुकेशन रही एमए हिस्ट्री रही ताकर गोटे गोटे विंग रही जो पिला माने यूनिवर्सिटी आसिक पढ़ी न पारिबे से माने कोन करिवे से माने पत्र माध्यम रे बा डिस्टेंस कॉरेस्पोंडेंस रे पाठ पढ़िबे तो से गुडाक मध्य हमर टीचर्स मान को पई मध्य सेटा रही किछि पढ़ी पारिबे से माने सो एगुडा को सब रही पढ़ियो देखियो बही सब अछि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एरा बहुत इंपोर्टेंट गोटे ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि कंट्रोल मॉनिटरिंग करथा टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विषय रे हम एनसीटी विषय रे की कोन जानि छटी कहलो एनसीटी मैम एनसीटी प्रथम 1975 मसिया स्टैट्यूटरी बॉडी नहि नथला प्रथम गोटे से गोटे कि रेकमेंड करिया पेंथला कि 1993 मसिया 94 मसिया ताको स्टैट्यूटरी बॉडी रे ताको कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रोविजन मिलला ताको स्टैट्यूटरी बॉडी रे ताको ट्रांसफर करा जाई जहा पळे सब जगह एम इंडिया जतक टीचर एजुकेशन अंडर रे जतक इंस्टीट्यूशन हे गला यूनिवर्सिटी हेला ताको से रेकमेंड करबो ताको से एक्रेडिट करिया पई ताकर एक्रेडिट तो नेक दिए से ताको रेकमेंड करथा ये खोली परिबो ये डिग्री दे परिबो आर हेडक्वार्टर दिल्ली रे अछि यस सो सेमती एनसीटी रा भी मध्य इन सर्विस टीचर मन को मध्य ट्रेनिंग दिया था जोटा कोन सो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग एबे चली छि स्कूल रे के कहबो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कोन सो चली छि स्कूल रे वर्तमान टीचर्स माने सो कोर जाउ छ सो पढिया पई ऑनलाइन रे मध्य पढुतबो दीक्षा मैम हम आरआई के बहुत सारा आसुन टीचर माने इन सर्विस नवा भाई देखु जो कि को प्रोग्राम तांकर से क्लास हेटी गला अटेंड कर जाना पड़े सो डिफरेंट सेंट्रल लेवल समृद्धि गोटे चली छि एसबीए सो बहुत टाइम रे विभिन्न प्रकार पॉलिसी से माने वर्ष एनुअली से माने डिजाइन करथांदे सबुरो आईसीटी रे धर हला कि निष्ठा विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग हाँ से सबू तक से डिजाइन करथांती एवं फेज बाय फेज सबू स्टेट रु डाकी किना सेति के नंबर टीचर्स मान को एस्पेक्ट को कॉम्पिटेंसी रे ताकू दिया जीव ट्रेनिंग ताकू डिसाइड करिकना से माने सेही गोटे मॉडल तयारी करथांती मॉड्यूल गुडा को तयारी करथांती ताकू से माने इंप्लीमेंट करंती वर्कशॉप करंती विभिन्न प्रकार इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइक कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप आ विभिन्न प्रकार लेक्चर ऑनलाइन प्रोग्राम्स है गुडा को सब करा जाई थे सो दैट कोन पाए हमें करथो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग काहे की देबा ताकि से माने निजो को आउरी करंट सिचुएशन कि चेंज आसो छै हम एजुकेशन ने से जो माने टीचर मान तो क्लासरूम रे पढेले से माने शिक्षा न होनांती तांको आसी कोन माने मझरे 6 मास के थरे लगा किबा वर्ष के थरे तांकर नियम अछि तमे जेमिति रे कि इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग रे एनरोल करि कि एटा को सेमिनार हे गला कि मीटिंग हे गला अटेंड करि एटा शिक्षा दी सेटा तांको जेमते एनईपी 2020 आसला ता बिसरे बहुत जणा को टाइम नै सब टीचर्स मान को पढिया पई ट्रेनिंग दिया जाउची प्रोफिशिएंसी बढ़िया पई टीचर मानकर एबल करिया पई न्यू पॉलिसी सहित संयोग करिया पई हमरो टीचर एजुकेशन इन सर्विस रे दिया जाउची यस सेथरे हमें कोन बहुत गुडे काम करछु स्कूल रे हमें जानि पनु कोन सब रहिला नुवा जिंस कोन आसला हम पाके टाइम नै किंतु एटा कोन ओरे सिस्टमैटिक वे रे हमें जदी इन सर्विस ट्रेनिंग नेले तो ताकुरे सिस्टमैटिक वे रे मॉड्यूल देखिना हमको वर्कशॉप करिकिना नुवा जिंस विषय रे रिफ्रेश करा जाउची नै कि ए सब जिंस रहिची अच्छा देन मेडिकल एजुकेशन ता ऊपर मध्ये पडियो व्हाट डू यू मीन बाय मेडिकल एजुकेशन medical education it is also a very important part of higher education. This medical education is education related to practice of being a medical practitioner, including the initial training to become a physician, and additional training thereafter. कौन सो विभिन्न सबु either गोटे medical officer हेई परिबो बा medical practice करि परिबो internship करिबा परे ता सहित मध्ये fellowship residential program continuing medical education मध्ये दिया जीवो सो गोटे भलो डॉक्टर होवा पई जो एजुकेशन करा जाईता सेटा हला मेडिकल एजुकेशन नर्सरी
सॉरी हमर नर्सिंग एजुकेशन मध्ये रही दाई करा जाई परिबो सेइथरे फार्मास्यूटिकल एजुकेशन मध्ये रही सो विभिन्न प्रकार रो मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स गुडा को रही सो एटा मध्ये देखिबो मेडिकल एजुकेशन हम इंडिया रे केमती फास्ट पीरियड रहिला एवं आफ्टर 1902 टू 1973 थर्ड फेज रहुची एवं तापरे बहुत डेवलपमेंट हेची मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई गुडा को सब ऑर्गेनाइजेशन हेची कोठरी कमिशन बा हमरो सब कमिटी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देखो वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1934 एवं तापरे विभिन्न एक्ट रे ताकू मॉडिफाई कराइछि 2001 रे मध्ये मॉडिफाई कराइछि सो मेन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इज टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सो विभिन्न प्रकार मेडिकल इंस्टीट्यूशन जोडा को रहिसेंती हमें कहि परिबा बरहमपुर रे गोटे मेडिकल कॉलेज अछि संबलपुर रे अछि बुल्ला रे अछि कटक रे अछि वर्तमान आहुरी मध्ये बारिपदा कलाहांडी बलांगीर ए सब रे मध्ये खोलुची तो सेइथरे केमती तार क्वालिटी केते रहिछि सेटा को मेंटेन बा चेकिंग करिया पे हमर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रहिछि सो मेंटेनेंस मैम भुवनेश्वर एम्स सेटा मेडिकल कॉलेज ना खाली एटा ट्रीटमेंट पे ना सेटा सेंट्रल गवर्नमेंट रो सेठी मध्ये एम्स रे मध्ये रिसर्च होउची आ पिला पढुचंती मध्ये पदे आ सेथरे मैम जो हाईटेक अछि हाईटेक से प्राइवेट अछि सेटा हाईटेक जो भी मेडिकल कॉलेज रहू ताकू एमसीआई ताकू अप्रूव करबा को पड़िता जेमति एनसीटी टीचर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूव करथे सेमती मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रहिछि जोटा कि अपन मेडिकल कॉलेज जोटा को माने को अप्रूव करथे क्वालिटी देखिना पाठ पढौदो किंतु इक्विपमेंट्स नथिबो टीचर्स नथिबे तो सेठी सेमने अप्रूवल देई नथांती सेठी केई मेडिकल कॉलेज रे पढी परिबेनी केते स्टूडेंट पढिए सेही स्टूडेंट को अनुपात रे सेठी इक्विपमेंट्स रहिछि कि नाही क्वालिटी मेंटेन होउछि कि नै से माने चेकिंग करथांती and maintenance of uniform standard of medical education at both undergraduate and postgraduate level जोटा पीजी भी करथांती मेडिकल गोटे पास कला परे एमबीबीएस हला परे पीजी करथांती तो तारो केते क्वालिटी कोन रही ताको मध्ये माने देखिथांती सो डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मेडिकल काउंसिल इट इज देयर सो इंस्पेक्शन विजिट permission they have to grant provide recognition de-recognition to maintain Indian medical register of persons so every doctor they are registered with MCI सेबा तांकर registration number भी अंदर रही था ताको registration करा जाय था through this MCI then जोटा कहउतलो All India Institute of Medical Science AIMS जोटा कि मध्ये रही छी nurturing excellence in all aspects of health so तार function गुडा कर रही छी different एथरे मध्ये undergraduate postgraduate education दिया जाय था and self sufficiency in postgraduate medical education the central government ro many रही nursing and dental education aims मध्ये दिया जाय था undertake innovation in medical education to provide producing medical teachers for the country to conduct research in medical and related science मेडिकल रिसर्च मध्ये थे कराइता जेमति कोविड आसी गला तो एम्स रे सेटा रिसर्च होउची बा सेतरे से माने फैसिलिटीज दोचंती केमति आमे ताको प्रोटेक्ट करि परिबा केमति कोविड ऊपर आउ रिसर्च ही परिबो ए सब विषय मध्ये से माने करथाती नाउ कमिंग टू एग्रीकल्चरल एजुकेशन बहुत ओडी जिंस रहिची एग्रीकल्चरल एजुकेशन कोन सो एग्रीकल्चर रिलेटेड एजुकेशन आमे कहि परिबा जेमति फार्मिंग केमति भलो हेई परिबो कंट्री रे कोन टेक्नोलॉजी एजुकेशन कोन एग्रीकल्चर रे हमें कोन देई परिबा सेगुडा सब हमर एग्रीकल्चर एजुकेशन को इंक्लूड करूची तार मध्ये डेवलपमेंट रहिची पढिबो एडा को सब फर्स्ट फेज सेकंड फेज टाकी ट्रेडिशनली चालुथिला एग्रीकल्चर धीरे धीरे ताकू तार मध्ये एम्फसिस दिया कि आहुरी रिसर्च ऊपर हेची तो कोन सब एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन अछि ओयूटी ओटे हमर अछि ओयूटी आईसीएआर हाँ सीआरआरआई कटक हाँ कटक जानी थी वो बट आउ पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूशन हमरो भी अछि सीटीसीआरआई सेंट्रल टीबो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूशन सेंट्रल वेजिटेबल ब्रीडिंग स्टेशन एगुडा को सब ऑर्गेनाइजेशन गुडा को रहिची डेयरी रिसर्च भी रहिची भुवनेश्वर रे कोन अछि फिशरी रो सिफा नहीं कि हां सेठी मध्ये सेंट्रल मैराइन फिशर रिसर्च इंस्टीट्यूशन भुवनेश्वर बहुत गुडे रिसर्च इंस्टीट्यूशन रहिची ट्यूबर रिसर्च हला तापरे एमआरआई सीटीसीआरआई केते प्रकार सब इंस्टीट्यूशन रहिची हां सब एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेरिकल्चर फ्लोरिकल्चर
एगुड़ाक सब सी फूड उपरे फिशरीज उपरे रिसर्च फॉरेस्ट्री वेटरनरी साइंस क्रॉस ब्रीडिंग ए सब तार गोटे ब्रांच है एग्रीकल्चर जो यूटी जीव यूटी बहुत सारा तुम डिपार्टमेंट्स गुड़ाक रही सेटा तुम एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स गुड़ाक यूटी रही से अनुसार डिफरेंट ब्रांच गुड़ाक रही then technical education, what do you mean by technical education? Technical education कौन ये कहबो मैंने मुझे आईआईटी मैम सेक्टर हे इंजीनियरिंग लाइनिंग रे जो किसी एजुकेशन ने किसी इंप्रूवमेंट आनिया पई ताको ऊपर जो रहिला Education with the help of technology. technology technical means field education technology. So different science and modern technology, applied science and modern technology we are having. Technological education is mainly we prepare some technicians, skillful person in engineering profession or scientific profession. There be history udaka rahichi padhibo. After independence, AICT, one body is there, AICT. Full form ke kahibo AICT ro. मैम ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सेक्टर एजुकेशन जोटा कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन गुडा को से अप्रूव करता जेंति एनसीटी एमसीआई एमसी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया माने एंती अप्रूव करछन्ती सेंती सब इंजीनियरिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशन गुडा कर अप्रूवल रहया कथा एआईसीटी रो हां सेटा मध्य रहिछि से सेटा को मॉनिटरिंग करथाय जेमती विभिन्न प्रकार कोर्स रही पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स रिसर्च फर्स्ट डिग्री कोर्स डिप्लोमा कोर्स वोकेशनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन गुड़ाक टेक्निकल एजुकेशन अंडर रे आसुची कौन सब रही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईएस जोटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सुनी थी सब रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रिपल आईटीएस एगुड़ा सब ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी टेक्निकल एजुकेशन माने देइथांती फंडिंग तांकर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट एजेंसीज एमने सब फंडिंग टेक्निकल एजुकेशन पई देइथांती नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन कौन सब रही बार जेमती कि कौन सब हमर एक्रेडिटेशन विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन को विभिन्न एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को माने एक्रेडिटेशन देइथांती बा अप्रूव करिथांती से माने बार काउंसिल ऑफ इंडिया जोटा कि हमर लीगल एजुकेशन गुडा को मध्य दिया जाइथे फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इंडियन नर्सिंग काउंसिल डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया एगुडा को मन रखिबो पिला माने सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जोटा हम कहूतिली सो ए जो रहिला वेटरनरी एजुकेशन को की कंट्रोल करिवो वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया रिहैबिलिटेशन काउंसिल माने जेमती एजुकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन विथ स्पेशल तांको मानको पई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया रहिछि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन को मेडिसिन ता आमे दबा न दबा से विषय रे मध्य रहि होम्योपैथी मेडिकल जो ब्रांच अछि ता पई का सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी एटा रहिछि हाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया तुमरा जो लॉयर मानकर जो एजुकेशन रोची किछि लीगल एलएलएम एलएलबी करछन ताकू फार्मास्यूटिकल काउंसिल रही इंडियन नर्सिंग काउंसिल रही एगुड़ा सब रही तो ये देखिबो तापर आसला ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग व्हाट डू यू मीन बाय ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम एग्जांपल इग्नो जोटा कि आसिला हमर कॉरेस्पोंडेंस कोर्स ओपन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन लर्निंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईएस सुनिथिबो बेले पेपर बाहे छै बा एडवर्टाइजमेंट देखिथिबो जो माने स्कूल कंप्लीट करि पारि नाहंती से माने सब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग रे पढिबे से माने 8 9 10 ए क्लास रे कमन मैट्रिक परीक्षा देई पारि नाहंती से माने मध्ये इथे पास करि पारिबे ऑनलाइन लर्निंग तो जानिछो विभिन्न प्रकार रो सेमिनार हो बा किछि जिंस तमे ऑनलाइन जेमति एटा गोटे ऑनलाइन क्लास होची त माने सिखुछो किछि से मध्य ऑनलाइन लर्निंग कर पारे विभिन्न प्रकार कोर्स गुडा को मध्य ऑनलाइन कोर्स गुडा को आसुची देखुथबो तमे एडवर्टाइजमेंट जे इति दिन कोर्स कले मैम मोकरे हमें ऑनलाइन क्लास करि परिबा मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स सेडा रहिथाय सेतरे जे कोनोसी कोर्स करि हबो फ्री रे हां मोक कोर्स गुडा को आसुची टीचर्स मान को पई हला हां तो सेटा मध्य हेई पारुची तो
एटा सब तमर रहिला डिस्टेंस एजुकेशन ओपन यूनिवर्सिटी तो हमर रहिछि इग्नू रहिछि संबलपुर ओपन यूनिवर्सिटी ओएसओयू हां जेमति कि हमें जो टाइम रे भी एडमिशन नहीं परिबा भी एग्जामिनेशन दे परिबो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओपन यूनिवर्सिटी हां समस्त को पाई ओपन एज सोशल स्टेटस जेंडर इट इज नॉट ए बार फॉर एनी लर्नर जी भी जेते समय जो प्रकार लर्नर हो से सेतरे एंट्री करि परिबे जो बयस रे मध्य वर्किंग नॉन वर्किंग जे भी आउ कॉरेस्पोंडेंस कोर्स इंस्टीट्यूशन जोटा डिस्टेंस एजुकेशन हमें कहउतले आगर कॉरेस्पोंडेंस चलतला किंतु वर्तमान सब सेटा को मॉडिफाई कि ओपन एजुकेशन कहउछंती समस्त को पाई जो पत्र माध्यम रे कॉरेस्पोंडेंस माने पत्र माध्यम रे आगर पढुतले तो डिस्टेंस जो कॉरेस्पोंडिंग कोर्स सर्टिफाइड कॉरेस्पोंडेंस कोर्स टा आगर कुहाउतला कि जे केवल पत्र माध्यम रे पढिबे बा कोनसी मटेरियल दिया गला कोनसी केमती क्लास हबनी किछि हबनी केवल तमे तामरो परीक्षा टाइम रे आसिकिना एग्जाम दबो सेटा ओडे ट्रेडिशनल टाइप रो डिस्टेंस एजुकेशन हमें कहि परिबा किंतु कॉरेस्पोंड वर्तमान डिस्टेंस एजुकेशन रो कांसेप्ट आसी एछि ओपन लर्निंग समस्त को पई ओपन हबो जेमति इग्नोर रहिछि एवं समस्त सब जे कोनसे समर एग्जाम दे परिबे एडमिशन करि परिबे एवं पढि परिबे ओपन यूनिवर्सिटी मैम डीडीसी रे जो है कॉरेस्पोंडेंस ना ओपन यूनिवर्सिटी कोटा डीडीसी उत्कल यूनिवर्सिटी रो सेटा कॉरेस्पोंडेंस बळे सेतर तो बेसिक किछि क्लास नाही तमरो बदे सेटा ओटे डिस्टेंस कॉरेस्पोंडेंस एजुकेशन बळे रहछि नाही मैडम क्लास हुए सेठी क्लास हुए मैडम सैटरडे एग्जाम पूर्व किछि दिन क्लास हुए अच्छा देन दैट इज डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम हला डिस्टेंस एजुकेशन सेटा हम करि परिबे तो ओपन लर्निंग आ यार डिफरेंस मु देछि सेतरे ओपन लर्निंग कोन डिस्टेंस एजुकेशन कोन टेक्नोलॉजिकली डिस्टेंस एजुकेशन इज मोर एडवांस इकोनॉमिकल स्केल लेस एक्सपेंसिव ओपन लर्निंग पॉलिसीज प्रैक्टिस दैट परमिट एंट्री टू लर्निंग विथ नो मिनिमम बैरियर एतरे बेसी बैरियर नाही बा बेसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें रखुनी ओपन जे कोन से समय रे तुम एडमिशन नै परिबो एग्जाम देई परिबो जेबे रिजल्ट पब्लिश करिया को चाहिबो तमे सेतरे ऑप्शन देई परिबो एमती विभिन्न प्रकार ओपन लर्निंग रे बेसी फ्लेक्सिबिलिटी रही छि देन डिस्टेंस एजुकेशन तो सही जिंस ही लिखा हि छि बही रे जहा अछि तमरो पढिबोटा डिस्टेंस लर्निंग टू वे कम्युनिकेशन फेस टू फेस मीटिंग भी हेई था यूज ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोसेस कि वोकेशनल ट्रेनिंग मध्ये हम डिस्टेंस लर्निंग रे देई परिबा हां separation of teacher and learner in time or place the distance learning रे आसुची mixed media software सोडा सब यूज हे परियो then coming to the third unit that is innovative alternate models of education तो इतरे किछि कोन कराय छि innovative alternative models of education ए जो यूनिट रही छि मेनली डिफरेंट मॉडल्स दिया छि केमति हमें इनोवेटिव वे रे जो माने पाठ पढिया को चाहू छथि बा आसी पारु नाहंती सेमानु केमति हमें मेन स्ट्रीम को आनी पाइबा मार्जिनलाइज्ड पर्सन मान को हमें मेन स्ट्रीम को आनी पाइबा गोटे इनोवेटिव वे रे अल्टरनेटिव माने हमें जोने फॉर्मल एजुकेशन को आसी पारु नाहंती ताको पई केमति इनोवेटिव आइडियाज बा मॉडल हमें यूज करि परियो जादरे के सेमाने मध्य मेन स्ट्रीम को आसी परिबे एजुकेशन थ्रू रे तो सेथि ऑब्जेक्टिव रही छि ए यूनिट रो स्टेट नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऊपर बेसी एम्फासिस दिया जाई छि हां रही छि तम बही रे इन अल्टरनेटिव इनोवेटिव प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट रे गोटे आसुची तमर नॉन फॉर्मल एजुकेशन जोटा कि रही छि एजुकेशन गारंटी स्कीम अल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन मध्य प्रदेश एजुकेशन गारंटी स्कीम डीपीईपी सुनिथिबो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जनशाला शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट लोक जुम्बिस एगुडा को सब अल्टरनेटिव मॉडल जो माने मेन स्ट्रीम को आसी पारु नाहंती जो माने बयस तांकर अतिक्रांत हे गलानी सुन पढी पारु नाहंती प्राइमरी एजुकेशन मध्ये जान नाहंती रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक फंडल मेंटल एजुकेशन ताकर नाही सेमान को पाई आमे अल्टरनेटिव इनोवेटिव प्रोग्राम डिफरेंट स्कीम्स थ्रू रे आनी थाउ कोन से एकलव्य मिरांबिका एगुडा को सब रही छि then the education guarantee scheme kono under EGS the government gives a guarantee to provide a primary school facility to the children in a habitation where there is no such facility within a kilometer within a period of 90 days of receiving a demand for such a facility by the local community ताको पाइका किछि अरेंजमेंट आमे करिबा एजुकेशन गारंटी सेमान को दिया जीवो हला ए सब नुवा स्कीम गुडा को आछि then शिक्षा पर्व अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ एजुकेशन
जोटा जो मन को पई एजुकेशन रो प्रोविजन नाही तांको किछि अल्टरनेटिव फैसिलिटी किछि अधिका फैसिलिटी आमे तांको किछि अलगा प्रकार फैसिलिटी आमे देबा जो दरे कि हमरो किछि एजुकेशन से मन को मध्य आसी परिबो से माने मध्य एजुकेटेड हेई परिबे alternative education centers will put in place to ensure children of migrant laborers who are dropping out of school are brought back into mainstream education. Ithre mainly marginalized children जो माने drop out children जो माने laborer अछंती ताका बापा मा afford करि परनांती बा गोटे स्थान न रही कि विभिन्न जगह को से माने मोबिलाइज हे जाउछंती तो सेमान का पई कोन फैसिलिटीज हमें देई परिबा अल्टरनेटिव एजुकेशन रे. अच्छा आ गोटे तुम रहला डीपीपी डीपीपी सुनिथिबे कोन डीपीपी मैम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी टीचर मान को इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग दिया जाता है. And universalize its main motive is to universalize access, retention and improve learning achievement and to reduce disparities among social group. District प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे गोटे प्राथमिक एजुकेशन करिया पई बा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम को हम इंप्लीमेंट करिबा. अच्छा आ गोटे इनोवेटिव प्रोग्राम अछि जेनसाला एटा गोटे ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 5 यूएन यूनाइटेड नेशन एजेंसी जेंति यूएनडीपी यूनिसेफ यूनेस्को आईएलओ यूएनएफपीए एमने सब मिसी किना गोटे करछंदी एलिमेंटरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करिया पई मेनली कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन यार मेन फोकस रही छी मल्टीग्रेड टीचिंग टू ओवरकम constraints in infrastructure. ट्रेन टीचर्स एटा हम ता ऊपर फोकस करिबा ट्रेन टीचर्स केमि जोगेई देबा गोटे कम्युनिटी को आ इंक्लूसिव एजुकेशन ता ऊपर मध्य एम्फसिस दे छी. मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कवर टारगेट गर्ल्स एंड मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन हला से मान को केमति हम इंक्लूड करि परिबा एजुकेशन रे. जनसाला पढिबो तुम बही रे अछि एटा आउडेला तमर शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट एटा गोटे इनोवेटिव प्रोजेक्ट. Mainly it is sponsored by Swedish International Development Agency, Government of India, Rajasthan eta kara haitla ebong mainly its focus is to universalized education, checking dropout. Eta oda project qualitative improvement of primary education. मैम पूर्व स्लाइड टा टिके देखंतु मैम एटा आगे एटा ला innovative way to community mobilization, sensitization and participation. एटा जनसाला program 2004 बेसिक फ्रेमवर्क एटा मेनली हमें विलेज एजुकेशन कमिटी को इंक्लूड करछे आ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिटी बेस्ड स्कूल कौन सो एक्टिविटीज कोचे कंसोलिडेशन मॉडलिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ माइक्रो प्लानिंग सो देजी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कौन अछि ड्राइव्स रे मां बेटी मेला मुनिया स्कूल जाइते एटा सब ताकर लोकल लेवल रे जोटा प्रोग्राम अछि सहीरा गोटे नारा तांको भितरे गोटे दिया हेछि किंतु सेंसिटाइज करबा हम पिला माने छिया माने भी स्कूल जिवे से विषय रे. अच्छा आउट शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट से विषय डिस्कस कले लोकजुम्बिस पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल ता माने हला सेटा एंड इज मेनली लॉन्च्ड इन 1992 बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द मेनली फॉर वुमेन ita कराइला this program for achieving main goal of universalization of elementary education ता ऊपर एडम कराइला mainly emphasis on girls education and development of literacy girls मान को में और रही एकलव्य फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन so it's a non profit organization non government organization एकलव्य इंडिया बहुत गुडे माने ऑर्गेनाइजेशन तांकर निजे निजे से माने डेवलपमेंट करछन जे मिरांबिका टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एटा मध्ये पढिबो that is also providing teacher training as well as establishing ideal school condition for students learning जोटा कि तांका स्कूल ले मिरांबिका रे रूम्स ऑफ साइलेंस रूम्स ऑफ कंसंट्रेशन रूम फॉर कोलैबोरेशन लेक्चर रूम सेउडा सब गोटे आइडियल स्कूल रो एनवायरनमेंट हमें मिरांबिका रे पाई परिबा गोटे मिरांबिका बोली गोटे स्कूल टा ऑर्गेनाइजेशन टा अछि that is also providing teacher training education there अच्छा एटा परे education for working children so एमन को पाई कोन प्रोजेक्ट रही छी education for working children गोटेला नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट एम वेंकट एमवी फाउंडेशन सुनिथिबो आउडेला महिला सामर्थ्य
वर्किंग चिल्ड्रन माने जो माने रहिछंती एजुकेशन फॉर वर्किंग जो माने काम करछंती लेबरर होउछंती काई करछंती माने सेमानकर काम सेमाने स्कूल न जाय के काम करछंती तांको पई कोन सब प्रोजेक्ट रहिछि गवर्नमेंट रो उडला नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट so mainstreaming children withdrawn from work directly in regular school bridge education withdrawal of adolescents in hazardous occupation and their skilling and integration in appropriate occupation awareness generation tracking of child and adolescent labor seman ko track kariba seman ko mainstream को फेरे आनिबा ताको एजुकेशन दबा एटा तार मेन एई प्रोजेक्ट रो मेन ऑब्जेक्टिव तो तार मध्य रहिछि विभिन्न सेंटर्स गुडा को स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट रे सब कोन सब रहिछि नेशनल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल इटा मेनली ऑपरेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर माने जो माने रहउछ ताको आइडेंटिफाई करिकिना करिया तपरे एमबी फाउंडेशन इज मामिडी पूडी भेंकटा रंगैया फाउंडेशन. He has founded this organization. It's a ME Foundation, the registered trust. It was established in the year 1981 in Andhra Pradesh. It's mainly working for the education of laborer children. So it is providing residential camps in which children spend between 3 and 18 months depending on their need. So गुडे कैंप माने करि थांती सबुआडे और सेठी मध्य जो लेबरर पिला माने पढी पारु नांती स्कूल जाई पारु नांती से माने से कैंप रे रही पाठ पढिबे एवं ए ट्रस्ट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट. So these are some kind of organization. आ गुडे रहला तमरा महिला सामक्ष्य एटा मध्य बहिरे अछि. It was started in the year 1989. It's a autonomous body. And it is controlled and funded by MHRD. So NGOs माने जो माने लेडीज माने अछंती बा जो माने महिला माने अछंती जो माने पढी पार नांती से मान को सपोर्ट देबा से मान को मेन एजुकेशनल नीड को सपोर्ट देबा यार मेन काम रहिछि महिला सामक्ष्य. ठीक अछि. So these are some of the projects. So you can find out details of all these projects in your book in Unit 3. Okay. So this is all about this class. अरे अच्छा ना कोड़े गल्ला सबू. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. के नोट करबा को प्रॉब्लम हो छी जे आपण माने शॉर्ट करि पड़ माने बुझिया को इजी हो छी लिखिया को भी इजी हो छी. मैम गोटे क्वेश्चन थिला. को मैम MES-15 रो होची कि हमर दीटा वॉल्यूम अछि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 टा हमर फर्स्ट ईयर पई के वॉल्यूम 2 टा हम सेकंड ईयर पई तो ना सब तमर दीटा को फर्स्ट ईयर पई. ओके मैम. दीटा को फर्स्ट ईयर पई तमने MES-015 कंपलसरी पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर. सेकंड ईयर को तम स्पेशल पेपर उडा को रहिछि. मैम वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 केते मार रहइबो. वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 देइछि कि से दीटा को फर्स्ट ईयर दीटा को तमे MES-015 एग्जाम जेबे दबो दीटा को पढी के जीवो एग्जाम दबा को. मैम मार केते रहइबो. थैंक यू मैम. मैडम असाइनमेंट सबमिशन डेट केबे जानि हो. तमे को बैच रो एडमिशन केबे करछो. मैम जुलाई 2023 हमरा डेट हला मार्च 31 सुद्धा तमे जमा करबो तमरा असाइनमेंट. एग्जाम डेट मैडम एग्जाम टा जून मास रे हबो 2024 मसिया जून मास रे हबो. मैम पेपर ए पेपर टा केते मार्क को कहि देबी. मार्क तो तमरो 100 मार्क रहउची बट सबुत्रु तमरो बदे 30 मार्क्स पड़े जीवो तमरा असाइनमेंट रे बदे मार्क तो ना ग्रेडिंग रे ही हबो बट मैं एमती मु कहूची आउ अधा तमरो 70% रहिबो एन जो एग्जाम रे. मैम इंपोर्टेंट क्वेश्चन. ओके थैंक यू. इंपोर्टेंट सुनो हमर 6टा सेशन अछि. हमें पढिबा प्रथमे
तापरे लास्ट सेशन जो दिन से दिन कम पाठ पढ़ा हम से दिन मु असाइनमेंट केमती लिखिबो कोन लिखिबो क्वेश्चन कोन डिस्कशन करबी ए लेवल में पढ़िने ए पर्यंत समस्ते तेनु एबे डिस्कशन करबानी हमर 6टा सेशन अछि हमको दिया जाईची तो लास्ट सेशन रे ही हमें से विषय डिस्कशन करबा एबे जो जहा भी तुमरा डाउट्स अछि से दिन क्लियर करबा ओके मैडम थैंक यू ओके मैम तेनु नेक्स्ट तमे नेक्स्ट जोटा रहला नेक्स्ट क्लास रे हमें यूनिट 4 5 जहाँ भी रही 6 रही टच करिया को चेष्टा करबा से टाइम रे पढ़ी की आस्थिबो आ गोथरे हमें डिस्कशन करबा थैंक यू हेलो मैम मैडम अच्छा Yes, थैंक यू मैम thank you, ma'am. थैंक यू मैम ठीक थैंक यू थैंक मैम यू मैम थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू मैम हेलो मैडम हां हां हेलो हां को हाँ मैडम आज जहाँ क्लास है सेथिरु इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहले हमतनी हां मु एका संगे कहबी सबुर मैडम आज माने आज जेती जहाँ क्लास है सेथिरु एंती इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहले पढ़िया पई टिके सुविधा हेतन मेनली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन ता ऊपर रही छी कि मु तुमको नेक्स्ट क्लास रे ही कहबी कोन सब रही छी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यस मैम ओके Yes, ma'am. ठीक अछि रहउची ताले Thank you, ma'am. Yes, थैंक यू ma'am. मैम Thank आज्ञा you. मैम थैंक यू मैम Thank you, Thank you ma'am. so much, ma'am. थैंक यू मैम जय अरे जगन्नाथ सुनो मैम हेलो सेदिन सार मना करथिले अजय सार जे माने असाइनमेंट विषय रे किछि विषय क्वेश्चन पचारिबोनी कारण सार भी रहउछन ना कारण सार ने बुझाइथिले बार बार पचार दउचंती आ सार ने बार बार बुझाइले कहले मु आसुची टिके ସମସ୍ତେ ପଚାରି ଦଉଛନ୍ତି नहीं नहीं एटा सार ने भल से बुझाइ देले ना कहले असाइनमेंट केबे कह हबो केबे असाइनमेंट केमिति लेखिबो एते तो माने ऑनलाइन बुझोछन सेटा बड़ कथा ले एते बुझो ना दि बाहर अलगा अलगा जो माने एमए करछन अलगा सब्जेक्ट रे नहीं असाइनमेंट क्वेश्चन पचार आज जहाँ पढ़ा हला तार इम्पोर्टेंट ना क्वेश्चन सेथेरे जत्ते क्वेश्चन पचारले जो हां के पार्टी पिटै परिबेनी कारण हम पाठ विषय बुझिने माने पचारि परिबा हां हां सेटा किछि नहीं ओके भुवनेश्वर रीजनल सेंटर रो व्हाट्सएप ग्रुप कोन अछि की भुवनेश्वर नलिन हां नलिनी देवी रीजनल सेंटर रो ए कोन जो स्टोरी सेंटर रो हेलो हां कौन किछि डाउट अछि यस यस असाइनमेंट क्वेश्चन लिंक टा केमिति पाई हबो कहि परबे टिके असाइनमेंट क्वेश्चन रो पीडीएफ टा अछि मु पठे दोछि सेउटा ग्रुप रे हम जो अछि ओडिसा ग्रुप मु पठे दोछि ओडिसा असाइनमेंट ग्रुप के रे पचारनी से मु जॉइन हेनी ओडिसा हां ग्रुप रे मोटा टिके को ग्रुप रे तमे अछ मु नलिन देवी स्टडी स्टडी सेंटर सेंटर रे कोटा नलिन देवी कोटा नलिन नलिन देवी देवी रे अछ नै नलिन देवी रे मु पठे दोछि लिंक टा ओडिसा रा आउतरे आज्ञा सथरे जॉइन आज्ञा हे सर आप थैंक हौ यू ओडिशा ग्रुप रो लिंक टा टिके शेयर करो गोटे सेकंड एथरे शेयर कर देबी ना को ग्रुप रे तमे अछ ना नहीं तमे सर मु से नलिन देवी ग्रुप रे अछि हम से नलिन देवी रे पठे दोछि ओडिसा ग्रुप टा आउतरे ओके सर थैंक यू हौ रखो सब लेफ्ट को सर मते भी ऐड कर दियंतु ओडिसा ग्रुप रे हेलो